produce repeatable result if we consider the same kind of the sample, right? So that's why very precise and in detail guideline is given as a ICH-Q2, which deals with analytical validation. I think this part is also covered by many other speaker who came before me. So I'm not going to go in detail about it. But I have interest more in ICH-Q8, which is pharmaceutical development, then ICH-Q9, quality risk management, ICH-Q10, pharmaceutical quality system, and ICH-Q11, development and manufacturing of drug substances, right? So here, when they talk about analytical validation, before I think 10 years, or if you will go back just to previous era of our pharmaceutical formulation and dossier submission to the US FDA or MHRA or TGA, right? So in that, when you submit a dossier, in that specific part which you have to submit, just like analytical method to analyze the active components in our product, right? So in that, whatever method you give, they will accept it. Maybe based on that, they produce some standard methods, which is prescribed mostly in pharmacopoeias, and some pharmaceutical industry, they have their in-house methods also, right? So that many a times the biasness occurs in the method through which they analyze the product and the results are presented. So just to minimize that, they had applied this kind of the principles, just like validation methods, and to make validation more precise and more reliable, they had made it mandatory to use quality by design approach to develop analytical method. Here, the validation principles are the same, but at the same time, you have to apply quality by design approach to develop a method, so that you must have detailed information and the knowledge about all the factors which are going to affect your analytes or the results of analytes, right? So in HPLC, if you will see, the many factors which can affect the peak area, many factors can affect the retention time, many factors can affect the tailing factor, right? So these factors, how they behave at certain conditions, that you must able to predict, and that power can be given by quality by design to your method, right? So to follow ICH Q2, you must have understanding about Q8, Q9, Q10 and Q11 also. So what is the quality by design? They all the regulatory body, by applying quality by design, what they expect from us. So I think this is also explained by Chinese sir yesterday. So I'm not going to go in detail, but just as a part of my work, I have to little bit touch up this part. Okay, so quality by design here. So when we start quality by design, we identify the analytical target profile. What will be the RT? What will be the retention time, otherwise area? What will be the tailing factor? So like that, target. So when you apply your quality by design, you have to identify what is your target analytical target profile. We will go into detail about this part in our coming slides. Once you identify what all are the important parameters for any analytical methods, after then you are going to find out critical quality attributes which affects the ATP. After then
Once you identify all these factors, you are going to identify what all are the factors can affect these CQS, critical quality attributes of your peak or your analytes. And that all the factors, how they behave and how they affect in quantifiable manners. To identify that, you have to apply DOE, design of experiment. So design of experiment ultimately will give you one equation, just like as you had prepared one equation, just like y is equal to mx plus c. That is an equation. What does it show? It shows if you increase the concentration or if concentration changes, how the effect will be there in absorbance in your UV method, right? So like that, we have multiple factors here. In y is equal to mx plus c, only one factor is there, just that is concentration. If you change the concentration, your absorbance will change, right? But what if the multiple factors affect? Just like if you will say in HPLC, what if you will change the column type? What if you will change the mobile phase components? What if you will change mobile phase composition ratio, right? What if you will change the temperature of elution, right? So these many factors can affect the quality or outcome of your analytical procedure. So that all the factor you have to take into the consideration, and you have to derive one equation. What will be the effect on RT? What will be the effect on area? What will be effect on retention time? Tailing factor, right? And if more than one elute are there in your procedure, then also you have to consider the separation, how good the separation is, right? So that all are the factors you have to consider, and you have to develop and create an equation. By using that equation, you are going to find out design space in technical term, in specially analytical quality by design. This term is known as method operable design region. This region is very important, and this region we have to submit along with our submissions of dossier while we are applying for ANDA or NDA application, right? Then once you find out this design space, you have to also give, and you have to also find out the control strategy and risk assessment also you have to perform. So what all are the factors can affect your elution, entire the method which you developed? What can go wrong, even though if you had controlled the important factors? So that decision and that strategy what you build up behind this entire validation process comes under the control strategy part, and you have to also perform the risk assessment. After that, QBD method validation. Once you got your entire proper procedure, then you have to go for validation process. Validation process is the same as you perform in your day-to-day life, right? But once you comes until the control strategy, then only you have to start validation. Once you validate, continuous method monitoring and improvement if it is required. Again, this cycle is continuous, right? So what is the position of DOE here? In specially analytical quality by design approach, so starts with information on synthetic route, then literature search, then analytical target profile identification, perform initial risk assessment using Pareto fishbone diagram. Then you can go for identification of CQA, critical quality attributes, which parts of method design development. Once you identify your CQA nothing but is your Y, Y1, Y2, Y3. It mostly what is the most important parameters given in validation protocol, right? Just like separation time,
area, minimum area, theoretical plates. So these all are your whys, CQAs, right? You perform the risk assessment for that. And for this purpose, you are going to use DOE here. Then you are going to optimize your method. Once you optimize your method, find out your design space. Then once you find out your design space, you have to decide control strategy. So nothing can go wrong during your analytical procedure when actual that method is going to apply in your end users. जो भी method use करने वाला है उसको. Then AQBD method validation, and finally CMM, continuous method monitoring. So this is the simple route. So here is the position of DOE, design of experiment. So I had given the title starting itself, DOE, a heart of QBD, and that's why only I had given here. So until unless you do not have command on design of experiment, forget about quality by design, right? Okay, what ultimate aim of DOE? So to avoid SUPEC application, right? SUPEC application is nothing but post-approval changes. Many a times when you submit your dossier, right, especially into the regulated market, once you submit your dossier, in that dossier you are also going to give the information about your valid analytical methods. In that method, maybe your product got approval. Suppose your NDE application or ANDE application got already approved. After that, you find out while the production phase or your product went into the market, and due to day-to-day practices, you find out something you can do slight change in your mobile phase ratio, or you might need some time, or maybe due to the availability of material, or maybe some other conditions, you want to change in that method. You want to change the type of column. You want to change the column chemistry. You want to change the ratio of mobile phase, or sometime you want to change your component of your mobile phase, right? Otherwise, you want to change the concentration of your active in your sample, right? So at the time, what happens? You have to give again one more application, and you have to tell them, okay, I want to make this change in my analytical method. With that application, you have to give some documentation, evidence, and you have to prove that, and you have to argue that, okay, yes, this change will not substantially affect the quality outcome of my product or quality analysis of my product, right? So this is very lengthy procedure. It may take 6 months to get approval for that small change what you had made in your analytical method, right? So, but when you don't need to submit this, when you are changing your parameters within design space, right? That time you no need to apply for SUPEC. You have to just inform the regulatory bodies that we are making this slight change in our analytical method, which we had submitted along with our dossier, right? They will straightforward, but if that changes are in design space, then you no need to apply for SUPEC application. So this is the importance, right? And it will save companies 6 months of time, right? So this diagram is very important. I think previously it has been explained by Chinese sir or not, I don't know. But let me give you just brief idea about it. Okay, this is the entire region which you explored during your optimization, method optimization, right? Out of this region, you find out this yellow region. Wherever I'm taking any point,
x1, x2, x3, x4, how many number of the factor which were considered. But whatever if you do the change, your y's, just like your y1, y2, y3 are of our desired point. They are not out of the limits which is prescribed by the pharmacopoeias, otherwise regulatory bodies, right? So in one word, if I want to say about this slide, the aim of DOE is to generate design space. In that design space, whatever change you do, you no need to submit SUPEC application. You just have to inform them that this change we had made and this change are within design space. So no time consuming activity need to perform and no need to submit numbers of the documentations. Again thing, you no need to also validate the design also. You no need to revalidate your method also. If you submit the application, if you make change within design space, right? So that is the importance of design of experiment for the industrial point of view. And as a student, I recommend that you are going to work in industry, specifically in analytical or ADA lab, what we call, right? Analytical development laboratories. Nowadays, all the companies which are performing or which are working for regulated markets, just like US FDA or MHRA, or if you will say the TGA, right? These all the regulatory bodies having, this is the mandatory guideline. If you submit the methods for analysis of active substance in the product, that method must be developed using quality by design. In that specific quality by design, you have to submit the design space, your range of design space, where all your Y, all the output variables are fulfilled, right? So this design space you can able to generate using design of experiment, right? Then what is this pink space? So this is again very precise area, that is control space. The yellow region is the design space and control space is this pink region, right? Maybe sometime if you will take some point from the center of design space, your Y's, your output variables are achieved very easily. But many a times, if you take the point from here, periphery of this design space, right? The maybe Y1, Y2, Y3 achieved, but Y4 is exit on the point. Unfortunately, sometimes due to the accidental or sometime due to the lack of attention of the analyst, happens that your Y4 may go out of your control, or may it will go out of the specification. So at that time, you can't do anything. So that's why further we will give some confidence interval, maybe 95% confidence interval is enough for formulations, just like tablet capsule when you talk about the formula, right? But in analysis, you have to give 99% confidence interval. What does it mean, 99% confidence interval? It means that if you perform same experiment 100 times, 99 times, the results which you are going to get is the same. There is no deviation from the results, right? So if you give that kind of the boundary inside the design space, there is a zero chance to go your results out of the specification. So that's why this space is called as a controlled space. So entire is the knowledge space,
out of this knowledge space, you are going to find out the design space. Within the design space, you are going to find out the control space, right? But what you need to submit during your application or the dossier, you have to submit the design space. But this is for our own satisfaction. मतलब जो कंपनी है वो खुद का एक अलग से मैकेनिज्म डेवलप कर सकती है कि भाई आपका जो एनालिटिकल मेथड है, इट विल नेवर गो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन using that method, right? So that is control space, and the importance is the SUPEC application. You will get the very much liberty during your if minute change is required, right? Okay. Now come to the, hope I'm clear about design of experiment. Is there any question up to here? See, let's make it a little bit interactive. If you have any question, please raise your hand. Otherwise, just stop there itself. This session is not like that. I will just talk, and you will just listen, right? So please ask up to now, up to the positioning of design of experiment. Do you have any question? I am happy to answer it. No, sir. Okay, all right. So hope I'm clear. What is the importance of design of experiment, right? Okay. Now let's start with design of experiment. So starting with the name of design of experiment. So it is a designed experiment. Just like nowadays, many people are using designer's clothes. Otherwise, we can call it as a tailor-made any commodities, which is specifically used for specific purpose, which have the high quality, right? Ultimately, it is the series of experiment which is performed in scientific manner, right? But before understanding the design of experiment, you must understand what is the experiment. So I'm taking you in general, okay? Because sir has told me just I have to take this session very beginners like that. So I'm not going to go in very directly to the top level. So what is an experiment? But I will go a little bit faster in that. So what is experiment? So experiment consists of material, method or procedure, then measurement system. Once you perform the method, you perform the quality control, you will get the result, you will analyze the result, you will interpret the results, and you will go for the conclusion. This is what my requirement, or this is what I got after performing experiment. Why we are performing experiment? To know something. Otherwise, we want to know the behavior of substance. We want to know the behavior of mobile phase components. We want to know the behavior of mobile phase ratio. We want to know the behavior of different columns, right? Like that. So material, your maybe mobile phase components, its ratio or columns. Method, so the two methods which we are following during the HPLC, gradient method and second one. So that method, then measurement system, you use any detector for specific purposes, right? Depends on the dilute. Then you get your result in terms of peak and peak parameters, right? Then you see the result. After that, seeing the result, you will analyze the results. You will compare the first experiment with the second experiment, like that. Then you interpret the analysis. You may need to compare two or within the group or between the group. Then you will get some interpretation. Okay, the mobile phase component, methanol behaves like this. If I will increase, the retention time decrease. So like that, you interpret. Finally, you come to the conclusion. A conclusion, right? So this is the simple fundamental parts of any experiment. In that, you can change the material. Matlab, you can vary the material, or you can vary the method. Measurement system must be the same during your entire or series of experiments.
So if you change the measurement system, right, of course your result is going to get changed, or it may not be consistent with the same kind of the sample. So measurement system must be the same when you perform the multiple experiment in if you have interest to determine the effect of material and effect of method. The results may change or may not change by changing the material or changing the method. This path will be the same. So this, what we are changing is our x, x1, x2, x3, x4, like that, right? And what the results, what we are evaluating, that is your y, your RT, your retention time, your tailing factor, or your theoretical plates are your y, right? Then results, then you are going to analyze using different statistical tool, just like t-test, ANOVA test, chi-square test, right? So you are going to analyze your result. Based on the chi-square test or ANOVA, you come to the conclusion. The factor x1 having so and so effect may be significant or insignificant. If the effect is insignificant, you may eliminate, or you may not. You may able to eliminate that factor from the analysis. Finally, you come up with the conclusion. So this is the fundamental parts of any experiment, not only analysis, but if you go to the physics, if you go to the chemistry, everywhere. This is the fundamental parts of all the experiments, right? What is the purpose of experiment? Why we are doing this experiment? To validate existing theory or phenomena. Otherwise, to identify best setting to get best of the best outcome. This is our purpose in analysis part, right? To identify best setting so that our illusion will be the consistent throughout the validation. What to do to identify best setting? क्या कर सकते हैं हम? Normally what we do? We perform experiment. We will try, right? Will it work to perform one experiment? क्या आप एक ही बार एक्सपेरिमेंट करके आपको कोई भी एक ही बार एक इंजेक्शन HPLC में लगाने से आपको पता चल जाएगा? What will be the effect of methanol? At the same time, what will be the effect of column or column chemistry or the mobile phase ratio or like that? No, you have to perform series of experiment, right? For that, you may hypothetically you will guess based on your basic knowledge, right? So need to perform the target oriented series of experiment. You can't come at the conclusion by using any one experiment. So you have to perform many experiments. So how previously people were doing? So best guess approach. भाई वो थोड़ा बहुत सोच लेते हैं या guess कर लेते हैं. चलो भाई हम रेशियो 50/30/20 यूज करते हैं. मोबाइल फेज कंपोनेंट में मिथेनॉल या any other component, you use it, select it, you will use the water or its pH or whatever it is, or column C18 यूज कर लेते हैं और इल्यूशन का कंसंट्रेशन कोई भी एक रख लेते हैं और we will try. In best guess approach, you may try indefinitely, right? You will try indefinitely if you will just go by guessing, right? This guessing may be the smart guessing based on your previous knowledge or previous experience. You may get sometime results, but chances are very less you will come to the very peak or optimum situation where your all the parameters of your peak meets the guidelines. So best guess approach, it is nothing but trial and error approach, right? Can't guarantee best solution has been found. Then उसके आगे का एक अप्रोच है वन फैक्टर एट अ टाइम, राइट? इसमें आप क्या करते हो, बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट कर देते हो, एक फैक्टर को मूव करते रहते हो. सपोज योर कॉलम इज कांस्टेंट, योर फ्लो रेट इज कांस्टेंट, योर mobile phase ratio, your mobile phase composition is same. Just like if you will take a methanol buffer and one iron pairing agent, just like THF, like that. So 3 components are there.
but you want to know what is the optimum ratio which can give the best illusion, right? So you want to change the ratio. बाकी के सारे फैक्टर आपने सेट कर दिए हैं. Column is same, your mobile phase composition is same, मोबाइल फेस का जो पीएच है वो भी सेम रखेंगे, आपका जो इंजेक्शन वॉल्यूम है वो भी सेम रखेंगे, आप जो मशीन यूज करेंगे, राइट, कौन सी कंपनी का यूज करते हो, मे बी वाटर्स और यू मे यूज द शिमाट्सू और एजिलेंट और एनी अदर, राइट, दैट इज ऑल्सो सेम, राइट. Temperature, column temperature is also same, everything is same. So you are just going to change the ratio. Instead of using 50-50, you are going to go for 60-40. Next experiment will be 70-30. Next experiment will be 80-20 ratio, right? So you are changing the ratio. Only one factor you are changing by keeping all other factor constant, right? This is little bit scientific compared to best guess approach. But here also, it is not guaranteed that you will come at the optimum point at particular time, right? You have to again perform the number of experiment. Maybe you may take 30 or 40 trials to come up to that conclusion that the ratio of 30-40 is good, which gives a good illusion, right? So again the problem is the same. You have to perform number of the experiment. यहाँ पे आपको indefinite numbers of experiment perform करने हैं, यहाँ पे आपको कुछ करने हैं but less than trial and error method, and this is little bit scientific method. But about the DOE, otherwise it is also called as a factorial approach, right? Invented in 1920. Here what you will do, you will design your experiment based on the preliminary trials. You will perform very specific number of the trials, just like 15 trials, 20 trials, or maybe 8 trials. So within minimum number of trials, you will come to the conclusion that these settings will give the best outcome or best illusion without deviating from the standard guideline, right? So this is the factor varied together simultaneously. यहाँ पे क्या करते थे, एक ही फैक्टर को चेंज करते थे, सिर्फ x1 को, बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट कर दिए हैं. तो here you may not able to find out the interaction effect. दो फैक्टर एक साथ में कैसे बिहेव करते हैं वो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा. But in design of experiment, you are going to change the multiple factors at the same time. It's called as a factor varied together simultaneously. The correct, modern and most efficient approach nowadays can determine how factor interact. तो यहाँ पे आपको जो interaction effect मिलती है वो आप determine कर सकते हैं, right? What is the effect if I will change from column A to column B at the same time, ratio from mobile phase ratio from A to mobile phase ratio B at the same time, right? Then use extensively in industry, R&D, and for process improvement. So it is nowadays very widely used. In our pharmaceutical industry, it came very late. In starting, it came into the agriculture industry. I will show you a little bit about the brief history of DOE. So he is the pioneer who invented the variance, that is Sir Ronald Fisher. Actually, his first application in Anova was published in 1921. After then, George E.P. Box, actually he is son-in-law of Ronald A. Fisher. He developed a response surface methodology which used the Anova. And using this response surface methodology only, we are using nowadays many softwares. Plus many other contribution to statistics. Other scientists has also contribution to develop the DOE till now what it is, right? There are 4 eras of DOE. It starts with agriculture industry, then it little bit polished or improved in first industrial revolution, especially in the minings and everything. Then second industrial revolution regarding the automobiles, then also it further improved. And nowadays, none of the industry who is excluded from use of DOE. So nowadays, all the industry,
right? You just say the name, there will be a design of experiment, right? So this is the growth of DOE and use of DOE. These all are the reference book. I'm just for your information. These all are the very important books you can refer if you want to learn DOE in detail, right? The Design and Analysis of Experiment by Douglas Montgomery, then Statistic for Experiments, and these all are the latest book, Journal of Quality Technology, Technometrics, and the American Statistician. These are the very specific journals who published regarding statistical or otherwise the design of experiment or quality by design kind of the research papers. So you can refer this kind of the journals if you have any doubt during your evaluation of design of experiment. In general, by using DOE, we can learn. हम क्या सीख सकते हैं using DOE? We learn about process. We are investigating. हम हमारे process के complete information लिख सकते हैं. We can screen important variables. Screen मतलब suppose if you will see the number of factors which can affect your illusion are maybe 20 or 25, right? But when you perform the design of experiment and using the factorial design, the number of factors should be less. Otherwise, you may end up with the numerous number of the experiment to come up to the optimal level. So before going optimization, you need to go for screening. So DOE also give you the power of screening. Out of 20 rigorous number of factors, you can come to the very precise 3 to 4 factor which can affect the most your illusion. By using that 3 to 4 factor, you can go for optimization. So screening is one of the important function of design of experiment only, right? It can build up the mathematical model. Mathematical model, just like y is equal to mx plus c, it is mathematical model, right? Right? How the concentration affect the absorbance. Like that, mathematical model, when more than 2 factors are there, x1, x2, x3, right? It will give you, while x1 is at particular settings, x2 in this setting, and x3 is in particular setting, what will be the results of y, right? So that is mathematical model. We will talk about it in detail because it is very important part. If you able to understand how to build the model, then your DOE is thorough. You through the DOE, आपको DOE समझ में आ गया, समझ लेना. तो how to develop mathematical model, अगर यहाँ तक आप समझ गए तो आपको DOE easily समझ में आ जाएगा. That's it. Obtain prediction equation. तो यही equation आप use करके predict भी कर सकते हो. कभी-कभी आप जो use करते हो to find out the concentration of unknown solution. You got your UV equation y is equal to mx plus c. You will get the absorbance by performing the UV analysis, right? So by using that absorbance, you plug that value into that equation. You can able to predict the concentration of that unknown sample. Yes. So that is the prediction, but that is the very scientific prediction. Okay, if absorbance will be this, the concentration must be that. Same way, if you have mathematical model of your y1, y2, y3, just like y1 is your retention time, right? So if you want particular RT, retention time, you can able to change your x1, x2, x3 using this mathematical model, and you can get that particular results perfectly and very sharp. Finally, the application of DOE is the optimize the response. You can optimize the response if required. Statistical significance is tested using ANOVA, and the prediction model is obtained using regression analysis. तो यहाँ पे जो दो चीज आपको समझनी पड़ेगी DOE समझने के लिए, one is ANOVA, how to perform ANOVA. I'm not going to go in detail about ANOVA. I'm directly going to use the ANOVA, right? So if you really don't have hand on statistics specifically on ANOVA, I suggest you brush up your hand with lot of practice in Excel or in book, not in software, right? So if you
want to learn DOE, you have to have knowledge about ANOVA. Then you have to also have detailed information or practicing hand on regression analysis, right? Multiple factor at the same time, right? So bird view of experiment. How our experiment looks like. So there will be an input factor and there will be an output factor. Input factors may be the people, right? We know that during the ruggedness or robustness study, we change the analyst. So if I will perform the same method with same equipment, with same settings, and in other laboratory, another person, the person who is going to perform the same experiment using the same settings and same type of equipment. So person, analyst effect is also there. That could be one of the factor. So which can affect the result. So input factor, people, material, just like column or mobile phase composition, mobile phase ratio, equipment, you might choose a particular equipment just like Shimadzu, Agilent or Waters, any. Then policies, that doesn't affect in our scenario. Then procedures, methods, and environment, just like a temperature, humidity, or the time, maybe in the morning, afternoon, or evening, otherwise day or night, like that, right? This could be the input factor. By changing this, the output factor get varied. Your Y1 will change. Sometimes you put or insert one injection in the morning, and at the same time, same procedure, same equipment, same person, the injection is given at evening. You might get the slight change in RT. Otherwise, you might just slight change in your area of your curve, right? So it could affect like that. So by changing the input factor, the output factor is going to get changed, right? Okay. Some common terminology before going to DOE. I will go one by one terminologies. If to understand DOE, it is very important. Hope yesterday your Chinese sir has already taken. I will not going to go in very detail, but it is very important. That's why I'm just taking in brush up for you. So types of the factor, two types of the factors, independent variable and dependent variables. What is independent variable? That is termed as x1, x2, x3, which we can change or manipulate. जो हम चेंज कर सकते हैं उसको इनपुट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, राइट? डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलेंगे? द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और परफॉर्मेंस. तो जब हम कोई भी HPLC मेथड डेवलप करते हैं तो इनपुट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से आ सकते हैं? We can say your type of column, your type of equipment, your column chemistry, your mobile phase ratio. So these all are the X. These all are your axes, right? Dependent variable, Y. Y कौन से आ सकते हैं during HPLC? Just like your RT, area, tailing factor, theoretical plate, separation, like that, right? So these all are the Y. In short, जो आप चेंज करने वाले हो वो आपके इंडिपेंडेंट फैक्टर है और जो चेंज होने वाला है वो आपके डिपेंडेंट फैक्टर है. डिपेंडेंट फैक्टर मतलब व्हाट? व्हिच आर डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अगर ये चेंज करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होंगे, राइट? सो दैट इज आवर रिजल्ट और आउटकम. That's why it is also called as an output variable, or also it is called as a response variables. So if you read the multiple research paper on QBD or DOE, right, sometimes they will called as an input variable, or that is same like independent variable. For dependent variable, they may tell about response or output variable. So don't get confused. You should to know. You should know about all the other or synonyms of these terminologies. But in short, in independent variable x1, x2, x3, dependent variable y1, y2, y3. Make it clear in your mind right now. Okay. Now let's see about the factors in detail about HPLC method. तो कौन कौन से factor हम
HPLC में consider कर सकते हैं. So this chart is our X मतलब independent variable, and this table comes about our dependent variables. Okay, so let's see. Types of independent variables, the factors. यहाँ पे सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं. These all are the independent variables. Based on application, ये फैक्टर को किस तरीके से फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, राइट? Then quantification, based on quantification, how to classify this type of the variable, because ये आपको जरूरी है. अगर ये आपको क्लासिफाई नहीं कर पाओगे तो जब आपको डिजाइन डेवलप करनी है या कंस्ट्रक्ट करनी है तब आपको डिफिकल्टी आ सकती है. तो classification of independent variable, it is very important to know and to understand and to practice also, right? It is one thing is very good in analytical development. Most of the factors are common for most of the analytical method development, right? So it is very common. You no need to just mug up this thing. If you practice 1 or 2 times, I think it will come to handy with you, right? ये बहुत आसानी से आपको handy हो जाएंगे. तो factors, तो कौन कौन से factor हो सकते हैं? तो number of elute, तो is it a single molecule elution or simultaneous elution, right? So number of elute, this is most of the time constant variable, right? And it is called as a numeric factor. It is numeric factor. कितने elute है? But if you go for biological samples, at the time the number of elute are vary. That might be 2, 3, 4, 5. Sometime I had seen many HPLC method for proteins from any crude drugs, or if you go to the biological samples, many proteins you have to identify, right? At in one chromatogram itself, right? So how many number of elute? It is also one of the factor, and that most of the time you have to keep constant, right? You can't do anything, right? You can't change the number of elute are present in your sample, right? So you no need to do anything about this, but at least you should be keeping the mind while developing any design plan, right? How many elute are there? Then second one is type of organic phase, concentration of organic phase. आपका जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज का कंपोजिशन की जो बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंपोजिशन वेरिएबल. तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फेज, आर यू यूजिंग एसिटोनाइट्राइल, आर यू यूजिंग मिथेनॉल, इथेनॉल, एनी अदर ऑर्गेनिक फेज यू आर यूजिंग. तो टाइप कौन सा यूज करते हैं? तो जो टाइप आते हैं वो कैटेगोरिक वेरिएबल होते हैं. कैटेगोरिक मतलब आप उसको नाम दे सकते हैं लेकिन उसको नंबर में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फेज, तो इस टाइप को वेरिएबल को बोलते हैं न्यूमरिक वेरिएबल. न्यूमरिक मतलब you can quantify it in terms of any unit. इसको कोई यूनिट नहीं होता है, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम और प्रेशर और लाइक दैट. कैटेगोरिक फैक्टर को कोई यूनिट नहीं होते हैं, लेकिन न्यूमरिक वेरिएबल को यूनिट होते हैं, राइट? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फेज, इट मे बी ml, राइट? or maybe in microliter or like that. So that kind of the factor is called as a numeric factor. Source of aqueous phase, मतलब पानी कौन सा यूज करने वाले हो? Are you going to we don't have any ambiguation in HPLC. We have to use HPLC grade of water or milky water, right? But in UV sometimes it get affects, right? Source of aqueous phase. Then concentration of aqueous phase in composition, mobile phase composition. मतलब रखोगे कितना? 30%, 20%, 50% या 80% of aqueous phase कितना है concentration? तो source is the categorical factor, but concentration of aqueous phase is the numeric factor again. Then pH of mobile phase, जो entire mobile phase दोनों को combine करने के बाद जो mobile phase बनेगा उसका final pH कितना होगा? That is a composition variable, because we know that if we change the pH, the elution is going to get changed. पूरा change हो जाएगा. And it is also this factor very much affects on tailing factor or many peak parameters of our elution. So that's why
pH could be one of the factor, and that is also comes under the composition variable. Then concentration of ion pairing agent, just like if you use the tetrahydrofuran, many elution require the iron pairing agent if your drug is getting ionized. So you want to stop ionization. So at that time you have to add the sometime ion pairing agent, and it will give your sharper peak compared to known if you don't using the ion pairing agent. So sometimes it is a part of mobile phase composition, and that's why we have to use it. But which ion pairing agent, that is categoric factor, but the concentration of ion pairing agent is the numeric factor. It also comes under composition variable. Then ratio of mobile phase 20, 30, 40. Sorry, you have to define the ratio, right? What ratio you are going to use, and it is a numeric factor. Then प्रोसेस वेरिएबल, हमारे HPLC में कौन कौन से प्रोसेस वेरिएबल हो सकते हैं? तो कॉलम टेम्परेचर, yes of course, and column temperature is the numeric factor because we can give the number in terms of Celsius or Fahrenheit or any other, right? कॉलम केमिस्ट्री, कौन सी कॉलम यूज करोगे? C18 यूज करोगे या any other? It also affect the manufacturer of that same C18 column, right? So कौन सी कंपनी की कॉलम है और कंपनी की केमिस्ट्री क्या है, राइट? उसका कंपोजिशन क्या है, दैट इज कैटेगोरिक फैक्टर. लेंथ ऑफ कॉलम, राइट? सो छोटी कॉलम, उससे भी बड़ी कॉलम और उससे भी बड़ी कॉलम, यू नो वेरी वेल अबाउट इट. लेंथ ऑफ द कॉलम अफेक्ट द प्रोसेस वेरिएबल. लेंथ ऑफ कॉलम इज द न्यूमेरिक फैक्टर. देन कॉलम सेचुरेशन टाइम, आप इल्यूशन करने से पहले कितना वक्त देते हो आपकी कॉलम को सेचुरेट करने के लिए, right? If, and this is also numeric because it comes under time, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, right? Column life, it is also आपकी जो आप जो कॉलम यूज करने वाले हो कितनी पुरानी है, how many injections already performed. So age of the column is not defined by the years how it's stored in the box, but how many elutions has been already performed using that same column, just like 20 elution, 50 elution. Most of the, if you will see the waters, it lasts up to 300 or 400 elutions, 300 injections, right? So how old your column, how used your column life is also one of the process variable, right? Different make of column, waters, agilent or any other. So that is categoric variable. Make of HPLC system, भाई waters का use कर रहे हो, Shimadzu का use कर रहे हो, एजिलेंट का यूज कर रहे हो, कौन सा मेक ऑफ द HPLC, दैट इज कैटेगोरिकल वेरिएबल. लेंथ ऑफ पाइपिंग, मतलब पाइप फ्रॉम द पंप अप टू द कॉलम इनलेट, अदरवाइज फ्रॉम कॉलम आउटलेट अप टू द डिटेक्टर. तो जो लेंथ है दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द इल्यूशन बिकॉज इट डिपेंड, इट विल अफेक्ट योर RT, कितना वक्त लेगा जब तक आपका जो ड्रग है डिटेक्टर पहुंचने में. It will define your RT. So length of the piping is numeric factor, and most of the time it is constant what we are keeping. Then number of pump, भाई single elution है या double pump है या triple है. So number of the components present in your mobile phase, you can use the as many as number of pumps. So maximum what I had used is up to three pump where the organic phase is pumped by separate, then aqueous phase or your buffer phase pumped by second pump, and your iron pairing agent or any other third component is there, that is pumped by third one, right? So it's available, and then you can use it. Otherwise you can go for isocratic method also, right? वहाँ पे only one single pump will be there, and it will directly pump your entire mobile phase through the column, and it will give the illusion, right? So a number of pump will affect the illusion because as you increase the complexity of machine, of course the illusion is also going to get affected. Then most important factor you might have also experienced if you had used your HPLC, then flow rate, right? So slight change in flow rate change the pressure inside the column, and it will also change the entire illusion.
or the properties of your peak if you change the flow rate, right? So, and it is a numeric. Then volume of injection. So 20 microliter or 10 microliter, or it depends on your injector module of your equipment. It will affect your area of your peak, right? Peak area. बहुत vastly affect होता है इससे. So you have to define it, right? So volume of injection, then concentration of sample solution. So what is the range of your calibration, right? So based on that, it is also going to affect your elution. Then extraction technique, if it is sample, suppose tablet sample, then you have to first extract your drug from the other ingredient. So how much time it required, what is the procedure of extraction? And if you are performing the bioanalytical method development or validation, so that time what is the extraction technique you used is vastly affect the elution of your HPLC, right? So कौन सा extraction technique आप use करने वाले हो, that is also one of the factor which can affect your elution. Then extraction time, extraction technique कौन सी यूज करोगे, कितने वक्त तक आप उसको एक्सट्रैक्शन करोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट्स. Then elution technique, gradient or isocratic, whatever it is, right? So elution technique is the category factor, right? So these all are the multiple factors can affect. Apart from this, some environmental factors are also there which can affect your elution, just like room temperature, right? Normal surrounding temperature where you are, your HPLC or your analytical equipment is locating. So if the room temperature is not controlled properly, surely you will get the change in your output result. So many a times we feel that भाई आर्टिकल का जो सेम मेथड है हम उठा के प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं. We are not giving attention to this kind of the factor, room temperature and relative humidity of the room, right? It will vastly affect, and this comes under environmental variable. Both are numeric. So if you want the same result which is stated in given published article, you have to take care or keep in the mind all these factors. So whenever you are replicating the method already which is published, try to keep all these factors in your mind and then start your experiment. You will get the same result. Otherwise, slight variations are ought to be there. वो आने ही वाला है, right? Okay. Is there any question in independent variable? All right. See, in two condition only questions are there. If you have do not understood anything, right, then question arise. And second thing is that if you understood everything, then also question arise. I taking the second part. You understood everything, I hope, right? Okay, all right. So up to now we had seen the methods, independent variables. Now comes to the dependent variables. So dependent variable can be varied, but very specifically if you will go to the analytical method validation for specifically to the HPLC, these all are the factors you will see as a dependent variable in most of the articles. Retention time, theoretical tailing factor, theoretical plate, and if it is the multiple component, then the resolution or simultaneous method, the resolution will be there, right? So retention time is the numeric because we can give in minutes. Tailing factor are also in number, it should be less than 1.5. Then theoretical plate, which must be more than 2000 or in some cases more than 3000 at least. And a resolution should be at least minimum 2 minutes. The distance between two peaks, right? 2 minutes should be there, ideal. But in when the more than 3 or 4 components are there, you can you have some liberty to change the resolution, right? So these all are the dependent variable. In other term, you can call these all are the Y's, right? Which you are going to use it.
This is the same example for uncoated immediate release tablet. I'm not going to go in this part because I think all the candidates who are present here are interested in analytical method or analytical kind of design of experiment, right? So if you have any question regarding formulation, yeah, I will share my contact. You can come and I will help you in that part also, right? So this is just for your information. You can define independent and dependent variables, but ultimate thing is that आपके कोई भी जो क्राइटेरिया और गाइडलाइन दी गई है उसमें जो क्राइटेरिया दिए गए हैं भाई जो आपको विद इन रेंज लाने हैं वो आपके वाई हैं वाई पे वाई के ऊपर जितने भी फैक्टर है जो वो चेंज कर सकते हैं दैट इज योर एक्स दैट्स व्हाई दिस यू कैन चेंज that is called independent variable and what is going to change is dependent variable. All right, okay, now some other terminologies. So हमने अभी क्या देखा भाई फैक्टर किसको बोलते हैं और कितने फैक्टर्स हो सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिपेंड्स राइट देन कम टू द लेवल because when you read any article you will come to know by we had used the full 2^3 full factorial design, we use the box Benton design, we use the CCD design, but how this design is defined based on the levels and based on the number of factors. तो पहले हमने फैक्टर देख लिए, फैक्टर could be n right, then level. तो लेवल हमारे पास दो टाइप के ही हो सकते हैं, 2 level design and 3 level design. 2 level मतलब एक लो और उसके सामने एक हाई. मतलब if I will define in a mobile phase composition, if I want to decide 2 levels for concentration of methanol, so I will decide low as 30% and high as a 60%. So that is range. 30% is the lowest concentration of methanol in my mobile phase and 60% is the highest concentration in my mobile phase, right? तो दो लेवल की डिजाइन होगी. यहाँ पे I can also take दो लेवल, मतलब कॉलम टाइप A लो लेवल, कॉलम टाइप B हाई लेवल. तो दो कॉलम I can use as a 2 levels, but that is categorical factor, right? The term which can define or describe in terms of number called as a numeric variable, right? Okay. तो दो लेवल, तो लेवल फैक्टर A लो लेवल एंड हाई लेवल, दूसरा फैक्टर लो लेवल एंड हाई लेवल, राइट? तो दो फैक्टर की डिजाइन है, दो लेवल की डिजाइन है, दो फैक्टर है, फैक्टर A फैक्टर B. फैक्टर A के दो लेवल लो हाई एंड फैक्टर B उसके भी दो लेवल लो एंड हाई, राइट? तो 2 लेवल्स 2 फैक्टर डिजाइन. अगर ए डिजाइन आप लगाते हो तो ए डिजाइन में कितने रन आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे? ए डिजाइन को बोलते हैं 2^2 फुल फैक्टोरियल डिजाइन. मतलब दो फैक्टर है, उसके दो लेवल है और फुल फैक्टोरियल है. इसका मतलब ये है कि एक ही फैक्टर दो अलग अलग सेटिंग्स पे आप यूज करोगे आपकी डिजाइन में. फैक्टर ए के लिए भी दो, फैक्टर बी के लिए भी दो. तो टोटल रन कितने परफॉर्म करने पड़ेंगे आपको? फैक्टर ए के लिए दो, मतलब 1 2, फैक्टर बी के लिए भी दो, लो एंड हाई. सो टोटल यू आर गोइंग टू परफॉर्म 4 एक्सपेरिमेंट to identify or see the effect of factor A and B. तो दो लेवल दो फैक्टर की डिजाइन है ये, दो लेवल दो फैक्टर की. अगर 3 लेवल बोले तो 3 लेवल मतलब लो, हाई एंड मीडियम. यहां पर ही एक फैक्टर बढ़ जाएगा. यहां पर भी फैक्टर ए लो, मीडियम एंड हाई. मीडियम मतलब सेंटर, मीडियम मतलब सेंटर. हाउ टू डिटरमाइन योर सेंटर? तो जो लो एंड हाई दोनों का एवरेज निकालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आपका मिडल लेवल हो जाता है. सपोज अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था भाई 30% मिथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन इन मोबाइल फेज इज लो एंड हाई इज द 60%. तो मिडल कितना आएगा बताओ मुझे, कोई बताएगा?
हेलो, कोई सुन रहा है? Yes, sir. तो मिडिल लेवल कितना आएगा बताओ मुझे. लेट मी सी हाउ मेनी आर लिसनिंग. मिडिल लेवल किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है? जो लो एंड हाई दोनों का एवरेज निकालना है. तो लो मिथेनॉल का कितना मैंने बोला? 30. हाई कितना बोला? 60. तो दोनों का प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो. 90. 90 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 45. तो हियर सेंटर पॉइंट और सेंटर लेवल विल बी 45. तो आपका मिथेनॉल 3 लेवल पे एक्सपेरिमेंट में एनालाइज किया जाएगा. 30%, 45% एंड 60%. Right? So this is how it is going to explain you about low, medium and high. दो टाइप की ही डिजाइन होती है. या तो 2 लेवल की डिजाइन होगी या तो 3 लेवल की डिजाइन होगी. 4 लेवल 5 लेवल हमारे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में होते नहीं है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं. राइट? प्रैक्टिकली ये दो टाइप के लेवल से आप मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट एनालाइज कर सकते हो या डिजाइन कर सकते हो. राइट? हाँ, ये जरूरी है कि 2 लेवल की डिजाइन कब यूज करें और 3 लेवल वाली डिजाइन कब यूज करें. तो वेरी सिंपल इज दैट. अगर यहां पे मैं देखता हूं 2 लेवल की जब डिजाइन होती है, भाई अगर ये कैटेगोरिक फैक्टर है, कैटेगोरिक मतलब उसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता हूं. मैं कॉलम ए को लो लेवल पे रखता हूं, कॉलम बी, कॉलम टाइप ऑफ कॉलम बी यहां पे रखता हूं. भाई इस दोनों में से कौन सी अच्छी है, कौन सी कॉलम मुझे ज्यादा अच्छा इल्यूशन देगी, अगर वो देखना है तो आई कैन यूज 2 लेवल डिजाइन. आई कैन यूज 2 लेवल डिजाइन. राइट? बट जहां पे आप 30, 45 एंड 60 तीनों कॉन्सेंट्रेशन जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें कर्वेचर मिलेगी. मतलब अगर जब आप इंटरेक्शन इफेक्ट डिटेक्ट करना चाहते हो या तो आप सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेट फॉरवर्ड. हेलो. Yes, sir. ओके. मुझे पता नहीं चला कब मैं मीटिंग में से निकल गया. कितना टाइम हो गया? ज्यादा तो नहीं हो गया ना? Sir, दो मिनट 2 मिनट. Okay, I was continuing. I just came to know that. Okay, anyway, I will share again. Okay. Okay, my screen is visible. Yes, sir. All right. तो
सम कॉमन टर्मिनोलॉजी में ये जो फैक्टोरियल है उसके लेवल रेस टू फैक्टर की हम जब बात करते हैं तो जो नीचे का जो शब्द होता है या नीचे का जो ये जो नंबर है वो लेवल डिनोट्स करता है और जो ऊपर का है वो फैक्टर डिनोट्स करता है। तो दो टाइप के ही लेवल हो सकते हैं, मैंने आगे बताया उस तरीके से। या तो दो लेवल की डिजाइन है, लो एंड हाई, या तो तीन लेवल की डिजाइन है, लो मीडियम एंड हाई। ठीक है, उसी तरीके से ये फैक्टर वेरी हो सकते हैं, दो फैक्टर हो सकते हैं, तीन फैक्टर, चार, पांच, छः, इट कैन गो एन नंबर, वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप जितने भी ये नंबर फैक्टर के नंबर बढ़ाओगे उतनी नंबर ऑफ ट्रायल आपको बढ़ती जाएगी। तो आप कितनी ट्रायल अफोर्ड कर सकते हो उसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ फैक्टर डिजाइन में इंक्लूड करने हैं। आपके पास समय कितना है, कितना खर्च कर सकते हो, या तो आपके पास कितना रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है हाउ मेनी फैक्टर्स यू शुड इंक्लूड। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट इन एनी एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन you should not go more than three factors. But if it is more than three factors, you should not use full factorial design. You should go for center composite design. Otherwise, you can go for Plackett-Berman design, right? You should not try full factorial design when you have number of factor more than three, right? Okay. So 2 raised to 2 मतलब it will give you how many number of trials? चार ट्रायल। फैक्टर ए की दो लेवल, फैक्टर दो, फैक्टर बी उसके भी दो लेवल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 1, 2, 3 एंड 4। अगर यही जगह पे अगर फैक्टर के नंबर में बढ़ा देता हूं तो फैक्टर ए लो हाई, फैक्टर बी लो हाई एंड फैक्टर सी लो एंड हाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 रेस टू 3 मतलब 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब टोटल हाउ मेनी ट्रायल्स यू 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 नीड टू परफॉर्म, बे गुणिया बे दो चार दो आठ, राइट? तो टोटल 8 बैचेस यू नीड टू परफॉर्म, total 8 batch you have to perform. How it is? It is 1, 2, 3, 4, मतलब ये तो आएगा ही आएगा, चार तो आएगी आएंगे, उसके साथ में एडिशनल which you have to perform is 5, 6, 7 and 8. So this is how 2 raised to 3 design looks like. ये इस तरीके से दिखती है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आप सीसीडी एक्सप्लेन या सीसीडी पढ़ने के लिए बैठोगे तब आपको ये डिजाइन विजुलाइज करनी पड़ेगी। अगर ये फुल फैक्टोरियल अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो आपको बाकी सारी डिजाइन आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फुल फैक्टोरियल डिजाइन। सो फुल फैक्टोरियल सीखने की ट्राई करना, कंप्लीटली सीखने की ट्राई करना, तो बाकी की सारी डिजाइन बहुत ही आसान हो जाएगी। इट इज वेरी इजी। बट अगर आप फुल फैक्टोरियल को एलिमिनेट कर दोगे तो बाकी की डिजाइन आपको गैस करनी पड़ेगी या समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, तो फुल फैक्टोरियल डिजाइन अच्छे से समझना है। देन 3 लेवल वाली डिजाइन, तो उसमें क्या है 3 रेस टू 2, 3 लेवल एंड 2 फैक्टर। तो लेवल कितने हैं 1, 2, 3, फैक्टर कितने हैं फैक्टर ए एंड फैक्टर बी। टोटल कितने रन हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
વેઇટ કરો વેઇટ કરો. ઓય મારું અનમ્યુટ થઈ ગયું, અનમ્યુટ થઈ ગયું.
Hello. Yes, sir. I'm extremely sorry because of this technical issue. I'm trying to resolve it. I just think I thought I okay. Okay. My screen is visible. No, sir. Hello. Okay. No, sir, it's If not. any interruption is there during my screen is not visible. No, sir, your screen is not. Now. Hello. Sir, it is not visible. I'm sorry due to this network issue. I'm trying.
हेलो हेलो Yes, sir, it is visible now. थैंक गॉड Hello. yes I'm extremely sorry because of this Hello. network issue. So we were hello, am I audible now? Hello. Yes, sir. Okay. So we were in types of factorials: 2 raised to 2 designs, 2 raised to 3 designs, 3 raised to 2, and 3 raised to 3. As the number of factor increases, number of trials increases. So it is depends on the analyst flexibility. भाई जो एनालिसिस कर रहे हैं, सपोज आप कोई मेथड डेवलप कर रहे हो, आपके पास लिबर्टी कितनी है, उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स यू कैन इंक्लूड इन योर डिजाइन, राइट? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने फैक्टर बढ़ाओगे उतने नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ते जाएंगे. सो ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द मॉडल. क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, जो ये पार्ट हो गया डिजाइन कैसे बिल्डअप करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट आता है डिजाइन रन करने का, मतलब यू आर गोइंग टू रन योर डिजाइन इन योर HPLC, then you are going to get the Y, results of Y at different experiment settings. Then you are going to perform ANOVA and regression analysis. Based on that, you are going to receive one equation, and that is nothing but our mathematical equation that we called as a model, right? Relationship between input and output variable. This is nothing but relationship between input and output variable. तो ये फंडामेंटल मैथमेटिकल इक्वेशन जो हम सबने यूज किया है, x जैसे वेरी होता है ऐसे ही y आपका वेरी होगा. लेकिन यहाँ पे एक ही फैक्टर है, कंसंट्रेशन ऑफ योर सैंपल, तो इसको सिर्फ x ही बोलते हैं. लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ फैक्टर बढ़ाते हैं, अगर 2 फैक्टर की डिजाइन है तो ये इस तरीके से इक्वेशन दिखेगा, ठीक है. y इज योर रिस्पॉन्स, मतलब रिटेंशन टाइम, otherwise theoretical plate, otherwise you can consider as a tailing factor. But यहाँ पे 2 फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, x1 मोबाइल फेस कंपोजिशन and the type of column, otherwise your you can call as a pressure of your system, right? So how both will change, how it will affect your y. This effect is called as a main effect. मतलब आपके जो डायरेक्ट फैक्टर 2 फैक्टर लिए है उसकी क्या इफेक्ट हो रही है y पे. अगर ये इक्वेशन थोड़ा और आगे बढ़ता है, you are also interested how x1 and x2 combinedly effect on y. So ये इक्वेशन थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ पर. तो this equation is like that. Okay, m1 is your coefficient. यहाँ पे जो कोएफिशिएंट आता है y is equal to mx plus c, तो m is the coefficient right here. At what exponents affects your y when you change the x, like that it can able to describe. तो likewise x1 का जो कोएफिशिएंट है उसको m1 बोलेंगे, x2 का कोएफिशिएंट m2 बोलेंगे. तो ये वन फैक्टर और मेन इफेक्ट बोलते हैं इसको. देन यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन 2 फैक्टर इंटरेक्शन, जो हमें 1 फैक्टर एट अ टाइम में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में आप ये एनालाइज कर सकते हो. जब 2 फैक्टर एक साथ में आते हैं तब वो y पे कैसे इफेक्ट करते हैं, लाइक दैट. तो मेन इफेक्ट विल बी ऑलवेज देयर. यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द इंटरेक्शन इफेक्ट x1 x2. तो यहाँ पे m कैसे लिखा जाएगा, m1 2, लाइक दैट को combinedly. And c is nothing but your intercept. You can also call it as a error. You can also call it as a error, right? Then y, इसके आगे अगर ये इक्वेशन बढ़ता है तो you are also going to get your quadratic effect. अगर x1 है उसका स्क्वायर कंपोनेंट में बढ़ाया जाए तो वो y पे कैसे इफेक्ट करेगा, इस तरीके से. तो इक्वेशन इस तरीके से डेवलप होता है और आगे बढ़ता है. तो मेन इफेक्ट इक्वेशन, मेन इफेक्ट प्लस इंटरेक्शन इफेक्ट वाला इक्वेशन,
और उससे आगे वाला इक्वेशन बोलते हैं भाई मेन इफेक्ट, इंटरेक्शन इफेक्ट एंड क्वाड्रेटिक इफेक्ट वाला इक्वेशन, ये हमेशा उसके अंदर रहता ही है। तो लाइक दिस, राइट। तो कौन सा इक्वेशन यूज करते हो उसके ऊपर से आपकी प्रेडिक्टिबिलिटी डिसाइड होती है। भाई जो ये इक्वेशन इंफॉर्मेशन देगा उससे ज्यादा अच्छी और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेक्शन इफेक्ट का भी रोल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इससे भी ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा ए वाला इक्वेशन जो हायर मॉडल बोलते हैं। तो ये लोअर मॉडल, ये उससे हायर मॉडल, ये उससे भी हायर मॉडल है। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज करके हम प्रेडिक्शन ही तो करना चाहते हैं। तो ये मॉडल जो प्रेडिक्शन पावर, जो एक मॉडल का प्रेडिक्शन पावर होता है, तो वो मॉडल कितने लेवल का है उसके उसके आधार पे वो डिसाइड होता है। तो सबसे बेहतर इक्वेशन कौन सा रहेगा प्रेडिक्शन के लिए? यू यूज क्वाड्रेटिक इफेक्ट in your model. So it will give the accurate prediction based on the response what you got during your design. Then model types. तो ये तो फंडामेंटल, ये इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट होता है ये मैंने आपको बताया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मॉडल टाइप्स। कितने टाइप के मॉडल्स आपको मिलते हैं व्हेन यू यूज सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक अ डिजाइन एक्सपोर्ट, मिनीटैब और जेपीएम और लाइक दैट। तो उसमें अलग अलग टाइप के मॉडल्स आते हैं। आपने नाम सुना होगा भाई मीन। मीन मतलब इंटरसेप्ट। यहाँ पे मेन इफेक्ट का कोई रोल नहीं है। अगर मैं x1 और x2 को 0 कर देता हूं तो बाद में जो इफेक्ट मुझे मिलती है वो मीन मॉडल बोलते हैं, एवरेज। मेन इफेक्ट मतलब जब आप मीन और इंटरसेप्ट के अलावा मेन इफेक्ट जब जोड़ते हो तो उसको बोलते हैं मेन इफेक्ट मॉडल। जब उसके अंदर दो फैक्टर का इंटरेक्शन डाल देते हो तो उसको बोलते हैं टू फैक्टर इंटरेक्शन, और शॉर्ट में उसको 2FI तरीके से डिनोट किया जाता है। देन थ्री फैक्टर इंटरेक्शंस। तो मेन इफेक्ट यहाँ पे थ्री फैक्टर कब रहेगी कि जब आपके तीन फैक्टर हो, x1 x2 x3, तब थ्री फैक्टर इंटरेक्शन इज पॉसिबल। अदरवाइज थ्री फैक्टर इंटरेक्शन इन टू फैक्टर नेवर इट इज पॉसिबल, राइट। तो जब आपके फैक्टर डिजाइन के फैक्टर तीन हो तब ये थ्री फैक्टर इंटरेक्शन कम्स इन द प्रैक्टिस, अदरवाइज इट इज नन ऑफ यूज। सबसे बेहतरीन जो मॉडल हम यूज करते हैं प्रेडिक्शन के लिए, मतलब ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो मॉडल होता है क्वाड्रेटिक मॉडल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मॉडल के अंदर जो स्क्वायर टर्म होती है वो इंक्लूड की जाती है, वो इंक्लूड की जाती है। तो हमेशा आपको कंफ्यूजन होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन करना जब स्टार्ट करोगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा भाई कौन सा मॉडल में सिलेक्ट करूं, मेन इफेक्ट वाला, टू फैक्टर इंटरेक्शन, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। तो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट इन माय प्रैक्टिस व्हाट आई सीन इज दैट if you want to perform optimization, at least your model should be up to quadratic model. So just select quadratic model for your optimization to generate the model, right? Okay. Other terms, effect, interaction, two-way interaction, three-way interactions are there, right? Then repetition, replication, randomization, resolution. These all are the terminologies are there. Due to this constraint of time and due to this technical issue, I'm not going to go in detail now. But if you want something more, I will give you my contact number so that you can anytime contact me. Then residual effect, run, orthogonal design, aliasing, and confounding. These all are the important terminologies. Will help you to help you during analysis of design. Now come to the how to
I don't know what is happening now. Okay. तो प्लानिंग फेज में select the problem, define objective, select the output response, then select the factor level. कितने लेवल की डिजाइन है वो सिलेक्ट करनी है. Then select the design. 2:2 factor design, Plackett-Burman design, center composite design या Box-Benton design. कौन सी डिजाइन आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट करनी है. Now you have design. Now you have design output. एक बार डिजाइन कंस्ट्रक्ट हो जाती है, then you have to perform the experiment based on the design output. जो भी डेटा आपको मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो आपको प्लग करना है इन द टेबल. वो टेबल को एनालिसिस करते हैं. उसके अंदर क्या क्या देखेंगे ड्यूरिंग द एनालिसिस? फिर आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फैक्टर. जो आपके 3 फैक्टर लिए हैं आपने ऑप्टिमाइजेशन में, तो कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है. मतलब आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच फैक्टर एंड देयर इंटरेक्शन. फिट एंड फाइनलाइज द मॉडल इक्वेशन जनरेट करो. Then the validate that model, उसको validate भी करना पड़ता है. I will show you how to validate. Then conduct cost benefit analysis of implementing conclusion. Now come to the conclusion. Do you have liberty to change the column? Do you have liberty to change the mobile phase type or organic phase type in your composition? Do you have liberty to change the equipment itself? So based on the cost analysis, you have to take one decision. Okay, yes, this is the possible thing, and these are the not possible which I can change it. So based on that, you will come to the conclusion and optimize the entire process. Now come to the checkpoint analysis, finalize the optimum setting, and this setting will give you the design space, and that you have to submit with your results. Steps for optimization I already explained. Now डिसीजन ट्री फॉर चूजिंग एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. तो डिजाइन किस तरीके से चूज करते हैं. तो नीड फॉर, अगर आपको डीओई लगाना ही है, सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, देन डिफाइन द मैट्रिक्स फॉर रिस्पांस वेरिएबल. रिस्पांस मतलब आपके वाई डिसाइड करते हैं. वाई के बाद आपको इनपुट वेरिएबल डिसाइड करते हो कितने हैं. तो उसके बेसिस पे, तो एक चीज आप समझ लो कि आप कौन सी डिजाइन सिलेक्ट करोगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है. कितने फैक्टर्स है आपके x कितने हैं, x1 x2 x3 कितने हैं, उसके ऊपर से डिसाइड होता है कौन सी डिजाइन यूज करोगे. ठीक है. तो इफ यू हैव लेवल, कितने लेवल की डिजाइन आप यूज करना चाहते हो, तो पहला क्वेश्चन आएगा भाई 2 लेवल करना चाहते हो या 3 लेवल करना चाहते हो. अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको स्क्रीनिंग करना है, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कम करने हैं, तो आप 2 लेवल की डिजाइन यूज करोगे. लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन है तो 3 लेवल की डिजाइन ही यूज करोगे. यहां पे आपको इंटरेक्शन इफेक्ट देखने को मिलेगी. 2 लेवल में इंटरेक्शन इफेक्ट मिलती नहीं है. ठीक है. ओके. देन टाइप्स ऑफ द फैक्टर, वेरिएबल्स ओनली, वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स बोथ. तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं. तो अगर आपके टोटल फैक्टर ऑप्टिमाइजेशन में 3 और लेस देन 3 है तो फुल फैक्टोरियल ही यूज करें, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन डिजाइन है which give you the highest possible resolution during the design of experiment. Otherwise, if you go for any low level design, your resolution will be compromised. ठीक है. resolution का बहुत महत्व रहता है भाई, डिजाइन का resolution कितना है. Okay. Then if you have factor more than 3 but less than 7, then you can use the Taguchi design. You have to also go for screening to minimize the number of factor 3. अगर आप minimize नहीं कर सकते हो, you don't have liberty to reduce the number, then use the central composite design or Box-Benton design. तो यहाँ से एक conclusion तो आसानी से निकलता है कि अगर आप analytical method में optimization करना चाहते हो, अगर आपके factor 3 है या 3 से कम है, go for full factorial. अगर 3 से ज्यादा है but less than 5 है, 5 से कम है, then go for central composite design or Box-Benton design. So that is the output. You have to take the message out of it, right? Okay. Now, कितने टाइप की डिजाइन बन गई? तो फैक्टोरियल डिजाइन,
रिस्पॉन्स सरफेस, मिक्सचर डिजाइन एंड कस्टम डिजाइन, ये सारे ऑप्शंस आपको डिजाइन एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर में मिलेंगे। देन फैक्टोरियल डिजाइन कितने टाइप की है? 2 टाइप की है, 2 लेवल एंड 3 लेवल। इसके अंदर भी फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिजाइन है, प्लैकेट बर्मन डिजाइन है एंड टैगुची डिजाइन है। बट दिस फ्रैक्शनल फैक्टोरियल also you can use for screening purpose, placket Burman design you can also use for screening purpose, and Taguchi design also you can use for screening purpose. But only 3 level की जो डिजाइन है वही चीज आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करनी है। तो हमारे लिए जब फैक्टोरियल की बात आती है कोई भी मेथड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो 3 लेवल की डिजाइन ही यूज करनी होगी। यू कैनॉट यूज फ्रैक्शनल, यू कैनॉट यूज प्लैकेट बर्मन, यू कैनॉट यूज टैगुची, राइट। बाद में रिस्पॉन्स सरफेस ऑप्टिमाइजेशन, बाद में मिक्सचर डिजाइन भी आती है। मिक्सचर डिजाइन यू कैन ऑप्टिमाइज स्पेसिफिकली द मिक्सचर ऑफ मोबाइल फेस। देन कस्टम डिजाइन यू कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट योर ओन custom design based on your requirement. We will see in the design expert software. Okay. Now, up to now, everything was theoretical. Now, till now, if you have any question, I would like to answer if you have any doubts. No, Hello. sir. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Till now, any doubts? How to select the design? No, Okay. So I will ask you 2 to 3 questions. Okay. If I have 3 factors and I have 3 levels, so which design I will use? Nikunj, can you tell me? Nikunj Parmar. Hello? Anyone can answer? If I have 3 factors, matlab mobile phase Hello? ratio, yes. full factorial design. Which one? Full factorial design. फुल फैक्टोरियल, लेकिन उसको क्या बोलेंगे? 3:3 फुल फैक्टोरियल डिजाइन। लेकिन अगर सेम कंडीशन में अगर मेरे पास 5 इनपुट वेरिएबल है एंड 3 लेवल की डिजाइन कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, तो कौन सी डिजाइन आई शुड चूज? अगर मेरे पास 5 फैक्टर है एंड 3 लेवल की डिजाइन है, तो कौन सी डिजाइन आई शुड सिलेक्ट? एनीवन? Central composite. और आई कैन चूज बॉक्स बैंकन डिजाइन। ये 2 डिजाइन हमारे लिए उपयुक्त रहेगी। ठीक है। नाउ आई विल शो यू द सॉफ्टवेयर, किस तरीके से ये सिलेक्शन आपको काम आती है। ओके, तो ये डिजाइन एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर है। होप एवरीबडी हैज यूज्ड इट और एटलीस्ट माइट हैव सीन दिस सॉफ्टवेयर, राइट। ये सॉफ्टवेयर हम एकेडमी के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हैं और ये 1 मंथ के ट्रायल के बेसिस पर भी अवेलेबल होता है। इसकी डायरेक्टली वेबसाइट पे आप जा सकते हो और 1 मंथ ट्रायल आप ऑप्ट कर सकते हो। अभी ये 10 वर्जन आई एम गोइंग टू शो यू, बट इट इज इन प्रैक्टिस नाउ। आई थिंक 12th वर्जन इज इन अवेलेबल, right? So based on your availability of the software, you can choose one, but just only the look is changed, but everything remain, most of the features are remain same, right? तो यहाँ से आपको क्लिक करना है न्यू डिजाइन। तो यहाँ जो आपको दिखेगा ये सारे 4 जो ऑप्शन है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। भाई फैक्टोरियल डिजाइन में जा सकते हो, रिस्पॉन्स सरफेस मतलब ऑप्टिमाइजेशन, जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो रिस्पॉन्स सरफेस में ही होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स सरफेस में। देन मिक्सचर डिजाइन, तो ये इतनी टाइप की मिक्सचर डिजाइन अवेलेबल है आपके पास। देन यू कैन यूज द कंबाइंड,
more than one design you can combine. तो ये मैंने तो यूज करने का चांस नहीं मिला है. What I had used is that factorial designs. फैक्टोरियल के अंदर अलग अलग टाइप की डिजाइन ये यहाँ पे दी गई. तो आप देख सकते हो ब्लैक एंड बर्मन डिजाइन, टागोची डिजाइन, ये दोनों डिजाइन आपको स्क्रीनिंग के लिए यूज होती है. मतलब अगर आपके फैक्टर 5, 6 या उससे ज़्यादा है और आप उसको कम करना चाहते हो तो पहले आपको स्क्रीनिंग डिजाइन लगानी है, स्क्रीनिंग के बाद आपको ऑप्टिमाइजेशन में जाना है, राइट. तो लाइक दैट. तो उसके लिए ये दो डिजाइन यूज कर सकते हैं. उसके अलावा आप फ्रैक्शनल फैक्टोरियल भी यूज कर सकते हो स्क्रीनिंग में. बट अगर आप ऑप्टिमाइजेशन में जाना चाहते हो तो रिस्पॉन्स सरफेस में क्लिक करने का यहाँ पर रिस्पॉन्स सरफेस. ठीक है, रिस्पॉन्स सरफेस में अलग अलग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. तो ये रहा आपका सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन. तो सबसे पहला आपको चॉइस दिया गया है यहाँ सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन. उसका रिजोल्यूशन फुल फैक्टोरियल से थोड़ा सा कम होता है. सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन किसका होता है? फुल फैक्टोरियल डिजाइन. तो फुल फैक्टोरियल 3 लेवल की डिजाइन कहाँ से मिलेगी? तो आप फुल फैक्टोरियल में जाते हो तो यहाँ तो 2 लेवल की डिजाइन है सबकी सब. देखो 2 लेवल 4 फैक्टर, 2 लेवल 5 फैक्टर, 2 लेवल 6 फैक्टर, 2 लेवल 7 फैक्टर, 2 लेवल 8 एंड 2 लेवल 9, राइट. तो इतनी डिजाइन यहाँ पे दे गई है. बट दिस डिजाइन यू कैन नॉट यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन, राइट. तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ होना चाहिए, 3 फैक्टर वाली. तो वो कहाँ मिलेगी आपको? तो you are going to able to search here response surface. In this response surface you can go for miscellaneous. यहाँ पे जा सकते हो miscellaneous. तो यहाँ पे आपको ये दिखेगी 3 level factorial, 3 level factorial. बाद में you can add the number of numeric factor. Numeric factor कितने हैं? तो it can up to 4, right? तो 3 is the ideal. तो ये डिजाइन कैसे बनेगी? 3 फैक्टर है और 3 लेवल है यहाँ पर, लो हाई. यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा सर तो तीसरा लेवल मिडल लेवल कहाँ चला गया? तो मिडल लेवल इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड यूजिंग बाय द सॉफ्टवेयर, राइट. यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा भाई कितना बैच मेरे को रन करनी पड़ेगी. तो नॉर्मल कैलकुलेशन करता हूँ मैं अगर, तो कितनी बैच मेरे को लेनी पड़ेगी? 3 फैक्टर एंड 3 लेवल है तो Anyone? तीन फैक्टर है एंड 3 लेवल है. आई वांट टू परफॉर्म फुल फैक्टोरियल डिजाइन. तो कितने रन मेरे को परफॉर्म करने पड़ेंगे? 3 into 3 into 3 फैक्टोरियल. तो 3 तेरी 9 तेरी 27, 27 बैच और 27 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आई हैव टू ट्राई व्हेन आई एम चूजिंग दिस डिजाइन. तो 27 रन आई नीड टू परफॉर्म. ठीक है, वो कैसे यहाँ पे दिखेंगे? तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये आप यहाँ पे अभी 0 कर दो. ठीक है, तो 27 रन आई हैव टू परफॉर्म. ये किस तरीके से दिखेंगे? तो व्हेन आई विल गो अहेड इट विल लुक्स लाइक दैट. आपके आर और वाई कितने हैं? यहाँ पे इसको आर बोलते हैं. ठीक है, रिस्पॉन्स. तो R1, सपोज आई हैव 3 Rs, 1, 2 and 3. I will get design like this. So this is the total 27 run I have to perform in 3⁻³ full factorial design. तो 3⁻³ के अंदर full factorial जब मैं डिजाइन लगाता हूँ तो 27 run I have to perform. Do you have that much time to perform 27 different combinations of all 3 factor 1, factor 2, factor 3? ठीक है, तो if you don't have, you can go for another one. Which one? Let's see. I will go for new design. I will go for box Benton design. 3 फैक्टर ही है यहाँ पर भी. ठीक है, टोटल रन मेरे को कितने करने पड़ेंगे? ये मैं सेंटर पॉइंट को अभी मैं 0 कर देता हूँ. सेंटर पॉइंट की जरूरत है लेकिन अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो कितने रन करने पड़ेंगे? 3 फैक्टर ही है. फुल फैक्टोरियल में भी 3 फैक्टर ही थे. लेवल तो 3 ही आते हैं ऑप्टिमाइजेशन में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 रन में आपका काम हो जाएगा. तो कितने रन करने पड़ेंगे? रिस्पॉन्स तो 3 के 3 ही है. ओके, कितने रन में आपका काम हो गया? 12 रन में. तो जो काम फुल फैक्टोरियल में
27 कॉम्बिनेशंस ट्राई करने थे, बॉक्स बैंकन में आपको सिर्फ 12 रन में काम हो जाएगा आपका, ओनली 12, राइट। सीसीडी में थोड़े बढ़ेंगे, थोड़े से बढ़ेंगे। लेट्स सी इन सीसीडी हाउ इट लुक्स। वी विल सी न्यू डिजाइन। You want to save? I don't want to change. No. Okay. रिस्पॉन्स सरफेस में सेंट्रल कंपोजिट। कितने न्यूमेरिक फैक्टर हैं मेरे? 3 है, 3, ठीक है। 3 फैक्टर्स आर देयर, 1 2 3, राइट। ब्लॉक्स 0 0, एवरीथिंग इज ओके। हाउ मेनी रन्स आर देयर? 20 रन्स, राइट। ये किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है उसकी भी थोड़ी मेथड है, लेकिन इन दिस शॉर्ट टाइम आई कैन नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट आई एम जस्ट शोइंग यू कंपैरिजन। फुल फैक्टोरियल, सेंटर कंपोजिट एंड बॉक्स बैंकन, तीनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाता है रन में, क्योंकि यही चीज हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हमारे पास टाइम कितना है, और कभी कभी ये भी होता है कि रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। तो फिनिश। तो यहाँ पे कितने रन करने पड़े? 20 रन। तो सेम थिंग आई एम यूजिंग हियर, ओके। अगर मैं FFD की फुल फैक्टोरियल यूज करता हूं तो आई नीड टू परफॉर्म 27 रन, बट व्हेन आई एम यूजिंग CCD, center composite design, that time I need to perform 20 run, and same time if I will using BBD, box bankan design, that time I need to perform only 12 run. Now you have to choose कौन से design you can able to afford, कौन सी डिजाइन आप अफोर्ड कर सकते हो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए कि भाई सर तीनों डिजाइन में रन कम है तो इसमें फर्क क्या पड़ता है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो फर्क रिजोल्यूशन का है। इट इज दिस डिजाइन इज कॉल्ड एज अ हाई रिजोल्यूशन डिजाइन, दिस इज डिजाइन इज कॉल्ड एज अ मीडियम रिजोल्यूशन डिजाइन, और जो ए डिजाइन है ये बोलते हैं लो रिजोल्यूशन डिजाइन। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन वही चीज है जो आपके मोबाइल टीवी में देखते हो या यूट्यूब जब देखते हो, भाई आप अलग अलग रिजोल्यूशन में ट्राई करते हो कि नहीं? 127 सबसे कम कौन सा आता है? 125 रिजोल्यूशन, उसके बाद में थोड़ा बढ़ाते हो 250, उसके बाद में थोड़ा बढ़ाते हो 350, तो क्लैरिटी बढ़ती है कि नहीं? तो उसी तरीके से इन अवर फैक्टोरियल डिजाइन आप जितना रिजोल्यूशन बढ़ाओगे, मतलब जितने रन बढ़ाओगे, उतना आपकी जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो इक्वेशन का प्रेडिक्शन पावर अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? तो जितनी नंबर ऑफ रन ज्यादा होगा उतनी आपका जो इक्वेशन जो आपको मिलता है वो इक्वेशन का प्रेडिक्शन पावर अच्छा होगा, ठीक है। तो नाउ एवरीथिंग इज ऑन एक्सपेरिमेंटर, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसको क्या चाहिए? तो एक्सपेरिमेंटर को तो यही चाहिए कि कम से कम काम करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है इंडस्ट्री में तो टाइम की ही तो मारामारी होती है। भाई आप मेरे को फटाफट एक दिन में पूरी मेथड वैलिडेट करके या डेवलप करके दे दो, तो एक दिन में आप 27 रन अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन प्लान करोगे तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बट नाउअडेज ऑटो सैम्पलर एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, एंड दैट्स व्हाई मेनी पीपल्स यूज फुल फैक्टोरियल डिजाइन। बट व्हेन यू आर गोइंग टू गो फॉर हेलो हेलो Yes, sir. all right, so this is what the selection part. Okay, now we will see another kind of the designs are also available like that. What I just suggest you is a mixture design. Okay.
तो ये जो मिक्सचर डिजाइन है, मिक्सचर डिजाइन कब यूज करते हैं? वी कैन नॉट यूज मिक्सचर डिजाइन एवरीवेयर। ये नाम पर से ही पता चलता है कि हमें कोई मिक्सचर है उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो हमारे HPLC डेवलपमेंट में मिक्सचर कहां पर आता है? एनीवन? हमारी HPLC मेथड डेवलपमेंट में मिक्सचर कहां पर आता है कि हमें कुछ कंपोनेंट लेने हैं, उसको एक दूसरे के साथ मिक्स करना है, और वो कौन सा कंपोजिशन ऑफ दैट मिक्सचर इज द ऑप्टिमम। तो यहाँ पे बात हो रही है मोबाइल फेज की। तो मोबाइल फेज एक टाइप का मिक्सचर टाइप है, ठीक है। तो मोबाइल फेज जब ऑप्टिमाइज करने की बात आती है, दैट टाइम वी कैन यूज मिक्सचर डिजाइन, ठीक है। मिक्सचर डिजाइन भी अलग अलग टाइप की है। सिंप्लेक्स लेटिस डिजाइन, सिंप्लेक्स सेंट्रोइड डिजाइन, स्क्रीनिंग डिजाइन, ऑप्टिमल कस्टम, यूजर डिफाइंड एंड हिस्टोरिकल। बट व्हाट आई सजेस्ट इज दैट you have to go up to at least simplex centroid design, simplex centroid design, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके 3 कंपोनेंट है, इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल फेज में 3 कंपोनेंट है, एक ऑर्गेनिक फेज, एक एक्वियस फेज एंड एक आयन पेयरिंग एजेंट है। या तो अलग तरीके से होते हैं, 2 टाइप के मोबाइल ऑर्गेनिक फेज है, मिथेनॉल भी है, एसीटोनाइट्राइल भी है एंड वाटर भी है। तो 3 कंपोनेंट हो गए। यहाँ पे 4 कंपोनेंट भी हो सकते हैं भाई। 2 ऑर्गेनिक फेज है, एक मिथेनॉल, एक एसीटोनाइट्राइल, दूसरा 3pH वाटर एंड आयन पेयरिंग एजेंट TH है। तो 4 कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ पे वो कोई लिमिट नहीं है कि कितने कंपोनेंट हो। जरूरी ये है कि जितने भी कंपोनेंट है उसका जो टोटल अमाउंट होता है वो फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर आपके जितने भी कंपोनेंट है, जब आप सबको प्लस करते हो तब उसका जो आउटपुट है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। सपोज आई वांट टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ मोबाइल फेज, तो 100 ml के अंदर जो मिथेनॉल है वो एक क्वांटिटी में होना चाहिए, एक एसीटोनाइट्राइल में लेता हूं और एक लेता हूं वाटर कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट है, ठीक है। तीनों कंपोनेंट में तीनों का जो टोटल होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। यहाँ पर ये एक जरूरी है, ठीक है। तो इट कैन गो अप टू 1 to 100। ये भी 0 से 100 तक जा सकता है और ये भी 0 से 100 तक जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम अगर मिथेनॉल मेरे कंपोजिशन में 0 है तो बाकी के 2 कंपोनेंट 50-50 यूज कर सकते हो, या you can vary it like that, right? Otherwise individual one component will use as a 100%, then all 2 will be remaining 2 will be the 0-0, ये यहाँ 0-0 हो जाएंगे, ठीक है। Okay, you can give the unit in ml or anything else, but I'm not putting that kind of the things. Okay, now how this design looks like, यहाँ पर भी रिप्लिकेट, जो नंबर ऑफ रिप्लिकेट में कोई भी नहीं करना चाहता हूँ 0 रख देता हूँ अभी, सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, हमारे y1 y2 y3 3 है, रिटेंशन टाइम, रिजोल्यूशन एंड थियोरेटिकल प्लेट, ये 3 मेरे आउटपुट y है। तो ये डिजाइन मेरे को इस तरीके से दिखेगी। 10 रन में काम हो गया मेरा। सिर्फ आप मोबाइल फेज कंपोजिशन ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो यू कैन एबल टू परफॉर्म विद इन 10 रन इटसेल्फ। पर यहाँ पे आपको बाकी के सारे फैक्टर कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, कॉलम टाइप, कॉलम केमिस्ट्री, कॉलम लेंथ, टेम्परेचर, टाइप ऑफ इक्विपमेंट, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, फ्लो रेट, इंजेक्शन वॉल्यूम, सारे फैक्टर कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। तो जब आपको मिक्सचर डिजाइन ऑप्टिमाइज करनी होती है, दैट टाइम यू कैन चूज दिस डिजाइन। ये डिजाइन का नाम क्या है? तो ये डिजाइन का नाम यहाँ पर ये रहा, सिंप्लेक्स सेंट्रोइड डिजाइन, सिंप्लेक्स सेंट्रोइड डिजाइन विथ 3 फैक्टर्स। ठीक है, ये डिजाइन का पूरा ब्यौरा यहाँ देख सकते हैं, लाइक दिस। ओके ओके, तो टिल नाउ एनी कंफ्यूजन? हेलो हेलो, No, sir.
Okay, all right. And how much time I have now? So I will go a little bit quickly. Anyone? Because I told to continue up to 1.5 hours, but I think it is almost 2 hours. Hello. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I had completed up to the design selection. If time permits, I can show you one example. If time is there, otherwise we can move for the next session if available. Jasmina, madam. Okay. Yes, sir. How much time it will be taking? I think it will take further half an hour if I will start once. Uh, Hello. Yes. Okay. Otherwise we can plan another session some other day also. It's not an issue. Otherwise, what will be there? Okay. So, I cannot able to can we justify. take a break and then after we can Yes, of course. We can come back continue? after half an hour. या तो आप बता दीजिए नो प्रॉब्लम आई डोंट हैव एनी इशू Okay. Okay then. Okay. आपकी आवाज कट रही है मैडम Then I will talk to Akbar sir and I will let you know. ऑल राइट Half hour thank is you fine for you? until now if you have any question you just keep it with you and ask me immediately when once we gather again thank you very much everyone see you again Okay.
Parth, Parth, are you there? ओके, आपका माइक नहीं चल रहा है या? ऑलराइट. What time everybody given? Actually, I was not able to hear that words last day. 1:15 or 1:30? Okay, then let's see.
Hello. Yes. Sir, can we start? Yes, of course. Shall I share my screen now? Yes, sir. Yes. Uh, all right. All right. Again. Am I audible to everyone? Now we are going to see in practice design expert software, and we are going to use two designs. One is box Bankan design, and if time permits, I will also show you the mixer design. Right. So let's start with box Bankan design. This is how once you open your software, it looks like this. So we have to construct first design. Right. So go to the new design. As I already told you, we are going to optimize the HPLC method. For optimization, we have to select 3-level design minimum, right? In 3-level, 3 options are there with us. One is full factorial, one of the best design which you can able to get through design of experiment. But if the number of runs which you can able to perform is less, then go for low resolution design. That is, you have to enter into response surface. So you cannot go into factorial 2-level. You have to go for response surface design. In the response surface design, we are going to select first box Bankan design, because we have example of box Bankan design. I'm going to follow this actually published paper by Suraj Chaudhary, design of experiment, venue for development, validation of RPHPLC PDA method for determination of ephemeral state in bulk and in-house tablet formulation. Our objective is to see whether in this paper they had used design of experiment. Second, they had optimized HPLC method. That's why I had choose this design. Remaining part, you already know how to perform validation and everything. I will show you in this paper how they had used the box Bankan design. So, but obvious, as per the standard protocol, select the independent variable and dependent variable, where you can find immediately in the table. So here are the factors, right? They had used 3 factors: methanol composition in mobile phase, pH of mobile phase, and flow rate. These 3 are their independent factors. And as a response, what they had selected RT, retention time in minute, theoretical plates, and tailing factor. Right. So these are the 3 Y what they had used. By constructing the design using the design Excel software, they got the 15 runs, and 2 additional runs they had taken just for the checkpoint analysis. So total 15 runs they had used for optimization purposes here in this. After analyzing, they got the 3 equation here. Using these 3 equation, they gone for the surface plot analysis, and applying the optimization criteria, they got their optimum batches.
right? They use the desirability for optimization, and these are the graphs. And finally, they got one final solution, right? And this solution they had validated, right? By using the as per the ICH guideline. तो हमारा काम ये जो validation से आगे का काम है, that I'm going to show, and validation you know already, which I believe, right? So I'm going to show you how to reach up to here. यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, that I will show you by using the software itself. So as we had seen here, these all are the factors. I had extracted this data in one Excel file so that we can go a little bit faster, right? Okay. So they had used the three factors x1, x2, x3 in the design. Box Benton design, we have to select how many factors are there. So three factors are there, right? All three factors are numeric factor. So I'm not going to select anything here, only three factor, and that is numeric factor, right? Name, I'm going to put all three name. Okay, methanol composition is there in percentage. I can give the unit here. pH having no unit, and flow rate ml per minute, right? Now I'm going to give the value. What is the low value and what is the high value for methanol composition? So I can very easily see in the paper itself here. For methanol, highest what they had used is, lowest what they had used is the 60, and highest what they use the 80, right? Software will automatically calculate the center line. So you have to see here, what is the highest value? 80. And what is the lowest value? 60 for methanol composition percentage wise. So I'm going to put here, lowest value is the 60, highest value is the 80. I no need to put the middle level. Okay, it will, software will calculate automatically. Similarly, for pH and flow rate, I had seen from the here the pH highest is 4 and lowest is 3. So I'm going to plug here, lowest is 3 and highest is 4. Similarly, flow rate, lowest is 0.8 and highest is 1.2, right? Here, I'm going to also take two additional center points, which I will take 3 additional center points. So I can able to determine the lack of fit. And you, whenever you go for optimization, at least you have to take 2 additional center points, right? So actually box bank can give the 12 run. Box bank can, if I will don't take any center point, then it will give me 12 run. But as I had taken 3 additional center point, so 12 plus 3, total I got the 15 runs here, right? In these 15 runs, this data has been plugged. Now I will go for continue. Now I have to add the response y. कितने y है मेरे पास? 3 y है. I can see here again the RT, TP and tailing factor TF. So I'm going to put here. First one is RT and theoretical plate and tailing factor TF. One thing I suggest you use always short form. Use always short form in software. It will help you, right? While describing the figures in a research publication. Otherwise नाम बहुत बड़े हो गए तो आपके फिगर में से बाहर निकल जाएगा ये सारे नाम. तो RT का यूनिट क्या है? मिनट. टेलिंग फैक्टर का कोई यूनिट नहीं है. एंड थियोरेटिकल प्लेट का कोई यूनिट नहीं है. इट इज नंबर एक्चुअली, राइट? एंड TF का भी कोई यूनिट नहीं है. सो आई एम गोइंग टू कीप द ब्लैंक. जो डेटा अवेलेबल नहीं है, जस्ट कीप इट ब्लैंक. नाउ आई विल फिनिश इट. Now software has given me these types of the output here, right? So this output, these all are the run I have to perform. Here I have to take 70% methanol, 3.5 pH and flow rate will be 1. The output what I am going to get, I have to plug here. मुझे यहाँ पे वो डेटा यहाँ डालना पड़ेगा. So I had performed all 15 runs here already. And now I am going to add the result, which I had already extracted from that Excel.
article. So I'm directly going to paste that data here, all that here, right? So I'm just pasting all the data here. So this is what I got the result here. So after performing 15 runs, I got this result. These are my results. Now the question is that how to analyze this data, right? So you directly go to the analysis part. तो ये डिजाइन का डेटा यहाँ प्लग कर दिया. Now you are going to go for analysis part. This is y1, y2 and y3. यहाँ पे r1 मतलब response 1, response 2 and response 3. हम तीनों को individually analyze करेंगे one by one. So for y1 is our RT, retention time. Go to the fit summary. In this tab, you have to directly go to the down, drag down, and this is the model summary statistic which you have to select here. ये आपको यहाँ से select कर लेना है. I'm also going to show you how to extract the data from this software also. कोई कौन से data आपको जरूरी है, बस बाकी के कोई data आपको अभी जरूरत पड़ेगी नहीं. तो select this model summary statistic वाला last part. Select all this data. I will share with you this Excel file also, how to create this analysis part. Okay, so here I'm directly going to paste here. What y1 RT, what does it suggest? The linear model is significant or selected. Software give the selection. We no need to select anything here. Okay, software will select automatically. Whatever it gives, just keep it here. No need to do anything in this. But you have to extract this data. Now go for the model selection. I told you already, for optimization, always select quadratic model. Always select quadratic model. This is the minimum requirement for optimization, right? You can go for higher model, cubic model, quartic model, fifth or sixth order model, but minimum is the quadratic, which will give you the square term, right? So select the model. Now you go for ANOVA. In this ANOVA, you can see this is the ANOVA table. This is the ANOVA table. This will show you your model is significant or not. So it shows that model is not significant. Model is not significant. And if you go down here, it will give you the coefficients. Here it will give you coefficients. Here for x1, coefficient is minus 1.18, for x2 0.071, x3 this one. These three are the two-factor interaction terms and its coefficient, and these are the square terms. जो हमने equation हमने देखा था आगे PPT में, वही चीज है ये, लेकिन ये tabular form में है. So very precisely you have to extract this data from the software, right? So I will put here coefficients and its estimates here. I have to select this. I will regression analysis के अंदर जब जरूरत पड़ेगी coefficient, ठीक है? तो I had created this table here for your convenience, RT. तो coefficient जो भी है यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाएगा, right? Coefficient. इस कोएफिशिएंट के p वैल्यू आपको यहाँ पे पेस्ट करना है. हाउ यू विल गेट, तो वो आपको यहाँ से मिलेंगे. फ्रॉम हियर टू हियर, दिस ऑल आर द p वैल्यू. ये p वैल्यू अगर 0.05 से ज्यादा होती है तो वो टर्म आपकी सिग्निफिकेंट नहीं है. यू कैन ओमिट दैट टर्म फ्रॉम योर फुल मॉडल, राइट? सो दिस इज द फुल मॉडल डेटा. This is the full model data, right? ये आपका equation भी यही रहेगा. You can also stream this data by using the this option, right? Ideally show 0.000, मतलब 3 डेसिमल तक आपको दिखाना होगा. Ideally, right? P value should be up to 4 decimal. 4 decimal तक दिखाई जाती है. Now we can see this here. The full model is not significant. तो हमें क्या करना पड़ेगा? We have to reduce this model. How to reduce this model? Go back to the model. In this model, auto select. Auto select में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं. क्राइटेरिया, आप किस बेस पे मॉडल रिडक्शन करना चाहते हो? 3 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन.
आइडियली सिलेक्ट पी वैल्यू, राइट। तो सिग्निफिकेंस के बेस पे मैं मॉडल रिड्यूस करना चाहता हूं। किस तरीके से आप रिड्यूस करना चाहते हैं? देयर आर 3 ऑप्शन, बैकवर्ड सिलेक्शन, स्टेप वाइज सिलेक्शन एंड फॉरवर्ड सिलेक्शन। सिलेक्ट बैकवर्ड सिलेक्शन। ये क्यों करना है इसके लिए अलग से एक पूरा लेक्चर लगता है, बट जस्ट सिलेक्ट बैकवर्ड। Alpha, your significance should be 0.01. You can also use 0.05 also, but ideally software will give suggestion 0.1. Keep it as it is. Now start. Software को जो भी टर्म्स इनसिग्निफिकेंट लगेगी वो यहाँ से वो रिड्यूस कर देगी, मतलब आपके फुल मॉडल में से उसको रिमूव कर देगी। Once software suggests that these terms are not significant, so you are going to remove it. So परफॉर्म एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट करते हो तो जो टर्म इनसिग्निफिकेंट थी सारी की सारी अभी निकल चुकी है मॉडल में से, तो मॉडल कितना बचा? इतना ही। दिस मॉडल इज कॉल्ड एज अ रिड्यूस मॉडल। नाउ अगेन गो बैक टू द एनोवा टीपीएस। नाउ यू कैन एबल टू सी नाउ द रिड्यूस मॉडल इज सिग्निफिकेंट। रिड्यूस मॉडल इज सिग्निफिकेंट। आपका जो ये जो कोएफिशिएंट है वो भी चेंज हो गए। चेंज मतलब कम हो गए। तो यहाँ पे ये मिथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन एंड सी, ठीक है, इंटरसेप्ट। आपको ये पूरे का पूरा यहाँ के लेके वी आर गोइंग टू प्लग इट इन अवर दिस पार्ट यहाँ से। तो इंटरसेप्ट कितना है? वी आर गोइंग टू पुट हियर कोएफिशिएंट रिड्यूस मॉडल का, ठीक है। देन मिथेनॉल इज योर x1, कीप इट हियर। योर C x3 you are going to put here. Then a square मतलब x1 square you are going to put x1 square here. Now you are going to put x3 square, that you are going to put here. The remaining terms are not significant, so it is removed from the full model. Removed from the full model. Now this is final equation for our reduce model. ये मॉडल हम प्रेडिक्शन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। सो अप टू नाउ क्लियर। सो y1 के लिए जो हमने किया वही चीज हमें y2 के लिए करनी है, वही चीज हमें y3 के लिए भी करनी है सेपरेटली। ओके, नाउ मूव अहेड। नाउ मॉडल रिड्यूस हो गया। You can go for diagnostic purpose. There are various plots are there. Here you can see the predicted versus actual. एक्चुअली ये जो सॉलिड लाइन ब्लैक लाइन है दैट इज प्रेडिक्टेड लाइन, और जो ये जो है डॉट्स आपको जो देखते हैं अलग अलग कलर के, दैट इज योर एक्चुअल रिस्पॉन्सेस विच यू गॉट। तो दिस इज द प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल के बीच में डिफरेंस क्या है दैट यू कैन एबल टू ऑब्जर्व हियर, राइट। देन यू कैन मूव टू द मॉडल ग्राफ्स। इन मॉडल ग्राफ्स यू आर इंटरेस्टेड इन contour plots, so copy your contour plots here and paste here. You can directly go for here y1 के लिए y1 ના જેટલા પણ ગ્રાફ છે આ ગ્રાફ તમારે જોશે, રાઈટ। એટલે કીપ ઇટ સેફ। આ રીતે તમે સિલેક્ટ કરીને મૂકી શકો છો। આ તમારા y1 નો ગ્રાફ છે। Similarly, you can also obtain your 3D surface plot. You can rotate it as per your requirement. इस तरीके से ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके उस तरीके से हमें इसको रोटेट करके रखना होता है। Now you can copy this also. Now this is also your one of the requirement while you submitting the data of your ICT filing, right? So you have to keep this data safe, right? Okay. तो ये हो गया एनालिसिस y1 के लिए। This analysis is performed for y1. Similarly, you have to go for y2 RT. फिट समरी में ये जो डेटा है ये आपको यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेना है। अगेन यू कैन गो बैक टू द मॉडल सिलेक्शन। दिस इज फॉर y2, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर रिग्रेशन एनालिसिस अगेन दिस पार्ट, राइट। हाउ टू गो लाइक दैट। तो y2 मॉडल यू हैव टू सिलेक्ट क्वाड्रेटिक मॉडल, फुल मॉडल, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के लिए फुल मॉडल ही सिलेक्ट करना है, क्वाड्रेटिक। नाउ यू गो फॉर एनोवा। Anova is the significant, good. Now you have to select your all the coefficients for y2. So you are going to paste here all the y2 data. What is the p value related to all this coefficient? It is available here. So you can select the
coefficient, sorry, p value. So you can paste here. Again, if it is required, just trim the data. ये जो डेटा ट्रिमिंग है वो साथ में ही करते जाइएगा, सो आपका टेबल भी अच्छा दिखेगा, वरना इट विल लुक्स वेरी ugly sometimes. Okay. Now we know that the model full term is model is significant. Lekin we can see here some terms. See, if the p value more than 0.05, that term is not significant and you have to remove from full model. राइट, तो ये टर्म भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ए भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये किस तरीके से रिमूव करते हैं? तो पहले बताया, मॉडल में जाना है, मॉडल रिडक्शन, ऑटो सिलेक्शन में पी वैल्यू बैकवर्ड 0.1 स्टार्ट, जो भी सिग्निफिकेंट नहीं है वो रिमूव कर दी जाएगी। एक्सेप्टेड, दो ही बची। नाउ यू गो लाइक दिस। ओके, नाउ दिस इज योर रिड्यूस मॉडल। नाउ दिस इज योर रिड्यूस मॉडल, यू हैव टू यूज दिस, राइट। तो यू कैन टेक लाइक दिस, बाकी की सारी टर्म फुल मॉडल में से रिड्यूस हो जाएगी। तो इंटरसेप्ट है, इसको ऐसे ही रखना है इंटरसेप्ट को। बी, दिस इज योर बी वैल्यू, मतलब x2, बी मतलब x2, एंड बी स्क्वायर मतलब x2 स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पर। बाकी की सारी टर्म इनसिग्निफिकेंट है, तो उसकी कोई टर्म आएगी नहीं, यू नो नीड टू कीप दैट। Alright, so this is the value you got for reduced model, right? Similarly, you have to perform for Y3 also. Now, once model is reduced, you can go for diagnostic. You can select this graph, predicted versus actual. You can select this, copy the graph and keep it with you, right? Then you have to go for model graphs. In model graph, you have to select your contour plots. This is your contour plot for Y2. Select it. You can always keep in separate sheet. Otherwise, you can also use the new sheet also. Y2. You can paste here very much easily. Okay. This is what you got here. This is your contour plot, and now you have to select your 3D surface plot. It looks visible, everything, so you no need to rotate. अगर जरूरी अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, राइट। बट इट लुक्स गुड, सो नो नीड टू रोटेट, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर नाउ। सो सॉफ्टवेयर में से डेटा किस तरीके से, कौन से डेटा जरूरी है, वही चीज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। बाकी कैलकुलेशन आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यू गॉट दिस वन। सिमिलरली यू हैव टू परफॉर्म फॉर Y3. तो हाउ वी विल गो ऑन? तो फिट समरी, select it, paste it here, मॉडल सिलेक्शन। तो ये हो गया आपका मॉडल सिलेक्शन। तो ये टेबल आपका पूरा हो गया, मॉडल सिलेक्शन समरी, ये टेबल इज कंप्लीट। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल ऑल्सो। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे? मॉडल, मॉडल में क्वाड्रेटिक मॉडल, फुल मॉडल के कोएफिशिएंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो वी विल टेक दिस फुल मॉडल कोएफिशिएंट्स and we are going to paste it here, right? You can trim the data as I already told you. Okay. All right. Now p value respective to that particular coefficient. So p value you can able to find out from here. This is the p value, and you can always paste like. This is the p value. Now you have to reduce this model also. Again, even though it is significant, always perform the reduction, क्योंकि रिडक्शन करने से आपका प्रेडिक्शन अच्छा होता है। जो टर्म काम की नहीं है वो टर्म निकल जाती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू गॉट एज अ रिड्यूस मॉडल। अगेन कलेक्ट योर डेटा फॉर रिड्यूस मॉडल कोएफिशिएंट्स। ओके, so intercept is here, B and C. B and C, so x2 and x3 here, x1 and x3. BC, two factor interaction is here significant. BC मतलब x2 x3 interaction, x2 x3 interaction, this one here. Then B square is significant, so you can collect B square मतलब x2 square, x2 square. So this is how you got your data here, and you can able to delete this. Now this table is complete now.
ये टेबल आपका कंप्लीट हो चुका है. So slowly, one by one, gradually, if you will move, you can finish it your all the analysis very effectively. But you should have proper plan and you should aware कि कौन से data चाहिए, क्योंकि software will give you the number of the data, but what data is of your interest. तो this much data is only interest of you, because publication के लिए यही data आपको चाहिए. Okay. Now, once the reduced model is ready, you can go for diagnostic. You can collect the predicted versus actual वाला ग्राफ है. ये भी आपका कभी-कभी जरूरत या काम पड़ता है. कोई जनरल देती है, कोई नहीं देती है. Depends. Now go for the modal graphs. So this is your contour plots. Select it. You can able to put it here. You can give the name Y3. You can paste it here very easily. Okay. Now this is your 3D surface plot. Now copy it. You can able to paste it here. So तीनों Y1, Y2, Y3 के, तो ये Y1 के contour 3D, Y2 के contour 3D, and Y3 के contour and 3D surface plot are available with you. Now you got your reduced model equations. Now next step is that, तो तीनों के अंदर analysis complete हो गया है. Now you are going to go for optimization. For optimization, you can go for numeric optimization. In numeric optimization, you have to set the goal. What is the goal? The goal, most of the time, what you see is that okay, ये जो गोल सेट किए हैं यहाँ पर, भाई ये बता रहे हैं कि भाई मिथेनॉल कंपोजिशन है, राइट, 60 to 80 के बीच में, अगर ये अप्रोक्सीमेटली 75 या 72 जितना इन लोगों ने रखा है अप्रोक्सीमेट. पीएच उन लोगों ने आइडियलाइज किया है 3 के आसपास, 3.5 के आसपास आइडियलाइज की है. एंड फॉर फ्लो रेट दे आर एक्सपेक्टिंग नियर टू समथिंग 1 or 1 something, yeah, 0.98 something they had idealized. Ideally they will write in the paper, but in this paper they have not given the data, so we have to just assume from this graph itself, right? What results they got is that, see, you can see the RT what they got for optimize is 5, right? So they had given the target here, right? So RT का target क्या रहेगा भाई? गोल इन रेंज तो होना ही चाहिए 4 इसके बीच में. एडिशनली यू कैन ऑल्सो गिव द टारगेट, राइट? so my target is suppose 5, so I have to write here target. My target is 5. Now for theoretical plate, all the guideline has given it should be more than 2000, right? So I can give here like that. So in आइडियली ये जितना ज्यादा होता है वो अच्छा होता है, राइट? तो थियोरेटिकल प्लेट जितनी ज्यादा होगी उतना आपका पीक एकदम शार्प होगा. तो वी कैन गिव द टारगेट लाइक दैट. द थियोरेटिकल प्लेट आई वांट मैक्सिमम, जितनी भी आ सकती है उसमें आप मैक्सिमम हमें सिलेक्ट करके दो. सो सॉफ्टवेयर विल टेक दैट काइंड ऑफ द कमांड. देन टेलिंग फैक्टर, तो टेलिंग फैक्टर तो जितना कम हो इतना अच्छा है. तो वी विल गिव द टारगेट लाइक मिनिमम टेलिंग फैक्टर. तो ये मैंने क्या किया, तो गोल सेट किए, गोल, राइट? तो ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन. तो आई कैन सी यू गोल क्या हुआ? आरटी, थियोरेटिकल प्लेट एंड टेलिंग फैक्टर. तो आरटी के लिए टारगेट क्या मैंने दिया? 5 मिनट. टीपी के लिए मैक्सिमम जितनी मिले वो अच्छा है. और टीएफ के लिए मैंने दिया मिनिमम, क्योंकि टेलिंग फैक्टर जितना कम है उतना अच्छा है. तो दैट इज अवर टारगेट, राइट? तो ये कमांड मैंने सॉफ्टवेयर को दिया है. ये डेटा आपको आर्टिकल में मेंशन करना होता है, भाई क्या आपने गोल क्या दिया है, ठीक है? तो आई हैड गिवन द गोल. नाउ सॉफ्टवेयर विल सजेस्ट मी द सॉल्यूशन. सॉफ्टवेयर विल सजेस्ट मी सॉल्यूशंस. तो कितने सॉल्यूशन दिए हैं? इतने सारे सॉल्यूशन दिए हैं.
ideally it will give you the 100 solutions. कितने 100. यहाँ पे 66 possibilities are there, which can take your all the desired outputs. I will just little bit की range जो भी मिले वो भी ले लेता हूँ. Solution, right? 5 something 2. Okay. तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने मेरे को सॉल्यूशंस दिए हैं. इट मीन्स दैट कि अगर मैं मिथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन 79.84 रखता हूँ, पीएच में 3.68 रखता हूँ, एंड माय फ्लो रेट इज 0.8, देन prediction is my RT will be 5.2, my tailing theoretical plate will be 2316, and tailing factor will be 1.139. तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, और इसकी डिजायरेबिलिटी कितनी है 0.47. ठीक है. आइडियली डिजायरेबिलिटी 1 की तरह, अगर डिजायरेबिलिटी 1 आती है तो वो बेस्ट होता है. इट व्हाट डज इट इंडिकेट्स? अगर आपकी डिजायरेबिलिटी 1 है तो जो सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर रहा है वही रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. ज्यादा है मतलब वही आएगा अगर डिजायरेबिलिटी 1 है. तो जैसे जैसे ये 1 से कम होती जाती है उसमें थोड़ा सा एरर, प्रेडिक्शन में थोड़ी सी एरर आने का चांसेस बढ़ती जाती है. सो दैट इज व्हाट इट सजेस्ट. तो डिजायरेबिलिटी जितनी ज़्यादा है वो चीज़ इतनी वो प्रेडिक्शन उतना अच्छा होता है, लाइक दैट, राइट. तो दिस इज व्हाट इट सजेस्ट. तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये मैं चेक पॉइंट के लिए उठा लेता हूँ. अब ये तो सॉफ्टवेयर ने सजेस्ट कर दिया है, बट एक्चुअली वेदर इट गिव दिस रिजल्ट और नॉट, आई हैव टू चेक बाय परफॉर्मिंग इट. सो आई विल टेक 2 बैचेस एटलीस्ट. 2 बैचेस में एटलीस्ट लूंगा ट्राई करने के लिए, भाई सॉफ्टवेयर जो बोल रहा है वही रिजल्ट मेरे को मिलता है कि नहीं. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ चेक पॉइंट एनालिसिस. This part is called as a checkpoint analysis. So I will take 2 sample points from suggested batches and I will put here checkpoint analysis. तो x1, x2, x3 की वैल्यू यहाँ मैं रख देता हूँ. 2 बेस में ले रहा हूँ. ठीक है. This is predicted. This is the predicted. Sorry, my response value. Okay. नाउ अगर यहां पर x1, x2, x3 की वैल्यू ये है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यू इज आल्सो गिवन हियर. आई विल टेक दिस प्रेडिक्टेड वैल्यू, पुट हियर माय प्रेडिक्शन. तो ये मेरा प्रेडिक्शन है. यहाँ पर ये इतना आना चाहिए. नाउ आई विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, दिस 2 एक्सपेरिमेंट, राइट. चेक पॉइंट बैच 1, चेक पॉइंट बेस 2. यहाँ पे जो डिजायरेबिलिटी है दैट आई हैव टू मेंशन. डिजायरेबिलिटी क्या है इसकी? तो ये दोनों उसकी डिजायरेबिलिटी है. आइडियली इट शुड बी 1. ठीक है. आई विल पुट दिस वैल्यू हियर 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक डेटा रखने का. ओके, ऑलराइट. नाउ दिस टेबल इज आल्सो रेडी. ये टेबल भी रेडी हो गया. नाउ आई हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट. अगर मैं ये सेटिंग्स रखता हूँ व्हाट विल बी माय आउटपुट. Suppose my output, I am just guessing it now, okay? Suppose it is like that. I got here 5.4 or 5.3. I got here 2, 4. Got here 2. Got here 2 and 4. Okay. So I had plugged my value here. Now I have to calculate what is the error, what is the difference, percentage difference between predicted versus experimental value. I had already given the equation here, so it is automatically got calculated. Okay, so don't get confused from where this data came. I had given this equation here. Can you able to see how to find out the percentage difference? So actual value minus predicted value minus
actual value divide by predicted value multiplied by 100. So I will get this value. तो ये difference कितना है prediction में? तो predict कितना किया था? 5.29. What I got actually 5.30. What is the difference? Prediction difference is 0.021. So it is very minute difference. It means that जो सॉफ्टवेयर बता रहा है वही रिजल्ट मेरे को मिला है. दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं चेक पॉइंट एनालिसिस. जस्ट अ मोमेंट. All right. So this is what I got here. So last point, what is remain is that you have to give the design space. So design space कहाँ मिलेगी? So that you can able to find out here in graphicals, right? In graphicals, जो भी आपने graphs दिए हैं, यहाँ पर आपको yellow zone मिलेगा. Yellow zone. In this yellow zone, whatever the flag you can put here, add the flag here. You can add the flag here. येलो जोन में जहां पर भी आप पॉइंट लेंगे, आपने जो टारगेट दिया है वही रिजल्ट आपको मिलेगा बेस्ड ऑन द डिजायरेबिलिटी. ठीक है. तो दिस ग्राफ यू हैव टू कॉपी एंड यू हैव टू पुट इट हियर अगेन. तो दिस इज द लास्ट पार्ट व्हिच यू हैव टू पुट हियर, y1 y2 y3, एंड यू कैन कॉल दिस शीट इज अ ओवरले प्लॉट. ओवरले ये प्लॉट आपको सबमिट करना होता है आईसीटी में, और अगर आप कोई भी चेंज करते हो आपकी मेथड में विद इन दिस येलो जोन, यू नो नीड टू फाइल एनी डेविएशन. अदरवाइज इन अदर वर्ड व्हाट दे कॉल्ड एज अ सुपैक एप्लीकेशन. आपको सुपैक एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. तो यहां तक अगर आपको काम करना है तो इस तरीके से ही ये होता है. हाँ, इसके अंदर भी अगर आप ज्यादा आपका रगड़नेस और रोबस्टनेस डालना चाहते हो रिजल्ट के अंदर, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ पर यू कैन ऐड द टॉलरेंस इंटरवल. टॉलरेंस, ठीक है. यू कैन गिव इट 99 बिकॉज दिस इज द एनालिटिकल मेथड. इसमें तो कुछ भी हिलना नहीं चाहिए. ठीक है. तो यू कैन गिव द टॉलरेंस 90.99. इट इज नथिंग बट 99%. Like this. Now if you will see that is already got affected, right? यहाँ पे पूरे का पूरा येलो निकल गया है. एक्चुअली ये नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जो आर्टिकल हम फॉलो कर रहे हैं उसमें ये थोड़ा एरर है. यू कैन रिड्यूस द टॉलरेंस 0.5. ओके. एक्चुअली ये एनालिटिकल मेथड के लिए तो 0.9 ही होना चाहिए. आई एम जस्ट शोइंग यू, ये सिर्फ देखने के लिए भाई क्या इसका इफेक्ट होता है. ठीक है. ओके. नाउ यू गॉट दिस पार्ट. इतना पार्ट है. ठीक है. जब मैंने टॉलरेंस कम कर दिया, मतलब एरर आने का चांस बढ़ा दिया, तो ये रिजल्ट मेरे को मिलता है. नाउ दिस ग्राफ यू हैव टू सबमिट इन द ICT filing or in your dossier while you submit the analytical method validation data using design of using quality by design. इसके बेसिस पे अगर कहीं पर भी आप पॉइंट लेते हो तो आपको सुपैक फाइल करने की जरूरत नहीं है. अगर बाहर कहीं पर भी पॉइंट में चेंज करते हो आउट ऑफ दिस येलो जोन, then you have to submit the सुपैक, और उसके लिए 6 महीना लगेगा अप्रूवल के लिए. It is the minimum time, right? So it depends in which regulatory agency you are submitting your data of your analytical method, right? So this is how it got evaluated and validated. Now, if anybody having any question, I am happy to address it, and I think this much is possible today within this short period. But if you want little more information, I am happy to share with you anytime. So you can contact me. From my side, that's all, and I'm open for any question and answer session. Thank you.
Yes, Jasmina madam, Ashok sir, Chinese sir. Yes sir, that's all from my side. If you have any question or if anybody audience having, I'm happy to answer it. I think any question from student side, because we already No, sir. Thank you. welcome Pooja and very dear student all. First of all, thank you the our today's resource person, Dr. Vinod Ramani sir, for giving a very wonderful and practical session to the student related to the application of DOE in the HPLC method development, and also importance, because we already know that when we are writing a research paper, okay, at the same time almost paper in a reputed journal, they mention in title that application of QBD means after application of QBD in the HPLC method development, there is a more chance to get your paper publication in very good reputed journal. So very thankful to Ramani sir on behalf of our SNLPC family and Vidyabharti Trust. We are again thankful to you and sparing your valuable time with our student. So thank you, sir. If any question, then we can also further. We plan to offline invitation for the Ramani sir, and we hope that anytime Ramani sir spare time for our student as well as for our institute. Thank you, sir. Yes, sir. Most welcome, sir. Anytime. Let me make it very clear, sir. See, with one day you cannot learn DOE, right? एक दिन में DOE नहीं सीखा जा सकता. हाँ, आप देख सकते हो ये किस तरीके से काम करता है. But until unless you will not try, आप खुद जब तक 5, 6, 10 आर्टिकल को फॉलो करके ट्राई नहीं करोगे, तब तक ये हैंडी नहीं होगा. और बिलीव मी माय फ्रेंड्स, इन HPLC और एनी मेथड डेवलपमेंट पार्ट, अभी कोई भी फाइलिंग होती है उसके अंदर QBD मैंडेटरी है, और मैंडेटरी है उसके कारण DOE भी मैंडेटरी हो जाता है. तो एज अ स्टूडेंट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू एवरीवन लर्न DOE इन वेरी डिटेल एंड इट मस्ट बी वेरी हैंडी विथ यू. आपको ये आना ही चाहिए. और जब आप अपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो आपके एमफॉर्म में फाइनल ईयर में, तब आप उसमें QBD डाले ही डाले, तो आपका थीसिस का वेटेज भी बढ़ जाएगा और पेपर पब्लिकेशन का चांसेस भी बहुत ही हाई हो जाता है. ठीक है, कंपेयर टू डू द नॉर्मल जस्ट वैलिडेशन. जो एट दिस पार्ट ट्राई टू लर्न इट. एंड QBD सीखने का एक ही इलाज है, यू हैव टू अप्रोच वेरी अग्रेसिवली. भाई मुझे सीखना ही है, आई विल लर्न इट एनी हाउ, तो ही सीख पाओगे. कैजुअल अप्रोच, you will not able to learn this QBD or DOE. You have to give aggressive approach. That's all from my side. Thank you very much everyone, and thank you Ashok Akbari sir and Dhiren sir, as well as all the faculty members, Chinese sir, who had involved in this very nice sessions, who had arranged this very important session for HPLC for the students, and I'm grateful to be part of it. Thank you very much everyone. Okay, thank you. Okay, all dear students, today is the last theory session. Tuesday at sharp 9:30, all should be reported for the practical session. Okay, we start at 9:30. Thank you. All can leave now.